सो नमस्कार ऑल ऑफ यू। तो आमर ओडिशा जुडिशियल सर्विस सबुठु इम्पोर्टेंट जिनस है मेन्स एग्जाम रे जदि आपण प्रॉपर आंसर टा लिखुचंती आंसर राइटिंग खाली आंसर राइटिंग आपणकर नॉलेज बेस ऊपर डिपेंड करेनी प्रेजेंटेशन आपण केमती करचंती ता ऊपर भी बहुत डिपेंड करे। तेणु आज जो कोर्स विषय में आपको कहूँ ऑलरेडी एटा क्वाइट पॉपुलर कोर्स स्पेशली जो माने नुआ प्रिपरेशन और सेल्फ प्रिपरेशन करने पे चाहते जो माने इंस्टीट्यूशनल प्रिपेयर करछंती तो मोस्टली से इंस्टीट्यूशंस माने ताको ए जिंसटा प्रोवाइड कर दियंती एटलीस्ट आरोहन रे तमे एटा प्रोवाइड कर दो पिला को कि प्रीवियस ईयर जति कि आपनकर 2012 रु आज पर्यंत जति कि मेंस रो आंसर्स लिखिबार अछि केमिति लिखिबार अछि दैट वी प्रोवाइड। तो आ बहुत पिला भी एटा कहि चंदी ताको पाइला पर इंटरव्यूज करिकारे कि एई जिंसटा ही सफिशिएंट थिला तांको एग्जाम क्लियर करिया पे। ओके तो ता विषय रे मु किछु कहबी कोर्स रे कोन अछि आपनकर। सो मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो थरे कि आपनकर 2012 रु आपनकर सब क्वेश्चंस कवर्ड हिची आज पर्यंत 2012 मेंस रू till date all optionals okay have been covered सब optionals एतरे आपनकर कवर हिची। ओके तापरे न्यू पैटर्न हिसाब रे एटा हिची न्यू पैटर्न माने कोन मु देखेबी आपनको केमती कोन तारो आंसर सरिका अछि। तो आमे बुक्स करिके जदी देखिबा किछि बुक्स भी हम अवेलेबल अछि तांकर जो स्टाइल ऑफ राइटिंग द आंसर ताकू जदी अपन लिखुचंती स्पेशली जो माने परीक्षा खाता देखी ओके जोटा कि एवरी ईयर मते से अपॉर्चुनिटी टा मिले जो पिला माने खाता मगांती से माने तापरे तांको भीतर जो माने आसी डिस्कस करंती मोर काहे मार्क कमी होला गोटे बड़ रीजन हला आपण जदी ताकू पैराग्राफ फॉर्म्स रे गोटे स्टोरी भलिया लिखि दिबे ओके तार इवैल्यूएटर में भी सी एते ताको एप्रिशिएट करिवेनी किंतु आपण जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स फुटी की बाहर थिबो जहा जहा पचारची क्वेश्चन रे अंडरलाइन हेथिबो डायग्राम थिबो केस लॉ टा क्लियरली देखा जाउथिबो केस लॉ देइचंती जदी रिक्वायरमेंट अछि क्वेश्चन रो इलस्ट्रेशन देइथिबे वैल्यू एडिशन पई आपण लीगल मैक्सिम गोटे देइथिबे। ओके तो एई सब जिंस जदी आपण करूचंती ताले आपण ठीक टाइम भीतर आपण आंसर भी सारी परिबे आ प्रॉपर मार्क्स भी पाई परिबे। तो आरो मेजर जदी मु कहिबी कोन कोन एडवांटेजेस अछि तो फर्स्ट हला आंसर जोड़ा रोचे न्यू पैटर्न हिसाब रे रोचे व्हाट इज दिस न्यू पैटर्न मु एबे गोटे कॉपी आपन को आंसर रे देखिबे त आपण जान परिबे। ओके आ जो स्टूडेंट्स माने भी हमर पढी की सेमती आंसर्स लिखि चंती तांकर भी टेलीग्राम रे जो माने रैंक्स पाई चंती टेलीग्राम रे हमें ओपनली तांकर टेस्ट सीरीज रो खाता गुडा देइचु आपण भी देखि परिबे सेथरे हम टेलीग्राम चैनल रे से खाता गुडा अवेलेबल अछि। तो सेही टाइप रो केमती लिखिबार अछि आपण को आंसर ता एथरे डायग्राम हिंट्स भी अछि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रे जोड़ा कि 15 मार्क ऊपर जो क्वेश्चन डायग्राम्स केमती करिवे अवश्य आमे सब क्वेश्चंस पे दे देछु सो दैट आपन प्रैक्टिस रहइबो। लीगल मैक्सिम्स एटा कोनोसी बुक रे प्राय मिलेनी बुक रे खाली इंपोर्टेंट आपनकर पार्ट्स रो इंपोर्टेंट सेक्शंस रो रिलेटेड लीगल मैक्सिम्स थिबो किंतु आम मॉडल आंसर से कोन ना ईच एंड एवरी क्वेश्चन पे लीगल मैक्सिम्स कोन कोन टोटली रेलेवेंट अछि सेटा दिया हिच। ओके आउ लैंडमार्क केसेस एटा आपन बुक्स से भी पाई जिवे आउ रिसेंट केसेस जोड़ा कि जनरली बुक्स से मिलेनी तापे आपण को किछि यू नो रेलेवेंट करंट अफेयर्स लीगल करंट अफेयर्स सोर्स आपण को पढिया पे पड़िबो। तो ये सब एथरे इंक्लूडेड हुए। कोर्स डिटेल्स यदि कहबा आपण यदि मार्केट रे एंटरकाइना आपणकर टोटली 5टा पेपर आपण को दबार अछि सो एटलीस्ट 2 to 3 बुक्स रे एटा कवर होए। ओके तो जदि भी आपण सेमती बुक्स हिसाब रे किनचंती आई डोंट थिंक इट विल बी लेस देन 2000 रुपीस टोटल सब पेपर्स पे किंतु आमर ये जो जब कि सब स्टूडेंट्स एटा एक्सेस करि परिबे तो एटा कोर्स फी आरो 500 रुपीस रखा हिची फॉर 1 ईयर। ओके आउ एटा आपण ऐप रे ही परचेस कर परिबे सेल्फ परचेस मोड रे एटा ऐप रे आपण को परचेस करिवार अछि आउ वैलिडिटी आरो रहइबो 12 मंथ्स पर्यंत 1 ईयर वैलिडिटी आपण को रहउछि। ओके 12 मंथ्स रो वैलिडिटी रहउछि। सो दिस इज यू नो वेरी वेरी इंपोर्टेंट टूल जोटा कि आपण को बहुत ही हेल्प करिवो आपणकर जर्नी रे ओडिशा जुडिशियल सर्विस पे एटा ऐप रे आपण निजे डाउनलोड करिकि ताको करि परिबे एनरोल करि परिबे निजे परचेस करि परिबे नहले जदि किछि इश्यूज अछि आपण लिंक दरकार ऐप रो एंड ऑल
ताले ए नंबर रे आपण कॉल कर दे परिबे 7684054656 किंबा ए नंबर रे आपण व्हाट्सएप भी कर दे परिबे ओके सो आई विश यू ऑल द बेस्ट मु कहउतली के को टाइप रो हमर एग्जाम रो ये रहउची तो दैट आई विल जस्ट शो यू एटा हला ता पैटर्न ता देखंतु हमर आंसर्स करिका केमती रहउची तो 8 मार्क्स रो क्वेश्चन हला इंट्रोडक्शन देला तार थ्योरी और एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉइंट्स ओके एथरे मेन जिंस हला आपनकर जो हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स से गुडा आपनको माइंड रे रखिबार अछि लैंडमार्क केस लॉस जा दबार थिला ता विषय दी लाइन लिखला कनेडा 8 मार्क क्वेश्चन लीगल मैक्सिम्स ओके एटा बेसिकली यू नो सबू रे त हम लिख परियन किंतु जे मने रख परिबो ता पई बहुत बड़ वैल्यू एडिशन एटा ओके तापरे तार रेलेवेंट इलस्ट्रेशन और कंक्लूजन एटा 8 मार्क्स पे देची ऑब्वियसली मु 8 मार्क्स पे आपन को एते बड़ आंसर 8 मार्क्स पे लिखियोबनी दैट इज ट्रू बट आमे एया ट्रीट करछु कि आपन एई पर्टिकुलर क्वेश्चन द एंटायर कांसेप्ट जेंति बुझी पारि जदी एई क्वेश्चन ता बे 15 मार्क की 25 मार्क पे पड़ला एई आंसर ता भी सफिशिएंट हबो ओके सो 5 मार्क्स की 8 मार्क्स क्वेश्चन रे आपन को डायग्राम दबार नाही बट वी हैव अज्यूम्ड एटा गोटे आपन को पूरा एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स गोटे आपन कहि दे परिबे जो तरी की सबु पार्ट्स तारा जो जा जा क्वेश्चंस पडुची इवन जोडा की आपन को प्रॉब्लम क्वेश्चन जिंदे एई क्वेश्चन स्टार होची ओके फिराक फॉर्मेट रे FIRAC ओके तो सेही फॉर्मेट रे आपन को दिया हेची ओके सो यू कैन गो थ्रू इट तारो आठू नहीं कि अपन निजो नोट्स भी बनेबे एमती नहीं कि अपन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिया ही जेची माने अपन एटा को ही भाबी देबे एटा अपन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ गुटे इन मन रखबे निजरो नोट्स भी एथरे बनेबार अछि ओके फ्रॉम हियर यू कैन मेक योर ओन नोट्स राइट सो बेस्ट विशेस फॉर योर प्रिपरेशन स्टे स्ट्रांग स्टे डेडिकेटेड जदी भी टेम्पोररी सेटबैक्स किछि रहूची आपण सेथरे भांगी पडंतुनी ओके प्रॉपर प्रिपरेशन जहाँ रिक्वायर्ड जेमती आंसर टा लिखिबा ता ऊपर फोकस करंतु निश्चित भाबरे सक्सेस आपन को मिलिबो नमस्कार okay so namaskar all of you is my voice audible to you Yes, sir. Sir, namaskar. namaskar acha so we will continue from yesterday's class so last class रे हमें concept टा पढ़िथिलु काली class रे okay that is facts in issue आउ relevant facts रा okay difference टा हमें देखथिलु तो तारो जदि हमें बेयर एक्ट को देखिबा ओके सो से डिस्कशन टा हमर स्टार्ट हिथिला ओके जेते बेले हमें फैक्ट्स इन इश्यू रो डेफिनेशन टा देखिथिलु बेयर एक्ट रे ठीक सेमती आजी जो पार्ट टा हमें देखिबा डेफिनेशंस रो ओके बेयर एक्ट रो से हिसाब रे देखिले तार डिस्कशन रे हमें बहुत गुडे इंसो कवर करिया जोडा हमें फर्स्ट क्लास रे भी मोर और लेस टिके कवर करथिलु okay so after facts in issue next जोटा आपनकर बेयर एक्ट रे देखंतु that is basically your the concept of may presume okay the concept of may presume right so बेयर एक्ट को देखंतु और I'll just put the relevant provision on the screen wherever it is provided by this adhiniyam that the court may presume a fact, it may either regard such fact as proved
unless and until it is disproved or may call for proof of it ହେଲା ये कौन कहूची फर्स्ट एटा बुझी जिवो तापरे कांसेप्ट को आसीबा जहा ऊपर आजिर क्लास टा रहबो सेटा हला द कांसेप्ट ऑफ प्रिजम्पशन इन लॉ ठीक अछि ये कौन कहूची आगे बुझी जिवो कि अधिनियम रे जदी कुहाउची ओके कि एई पर्टिकुलर फैक्ट को कोर्ट प्रिज्यूम करि परिबे मे प्रिज्यूम करि परिबे ठीक अछि फर्स्ट क्लास रे हमें देखथिलु मे और शैल रो डिफरेंस कोन इंग्लिश रे जहा मोर और लेस डिफरेंस एठी भी से डिफरेंस वन इज ओके द डिस्क्रिशनरी जोटा कि मेटा ठीक अछि चाहिले कोर्ट कर परिबे ओके चाहिले न करि परन राइट शैल रे हला इट इज ऑब्लिगेटरी मैंडेटरी ता माने बाध्यतामूलक जोठी शैल लेखा हबो सेटा जहा भी हेले हबो ठीक अछि सो मे प्रिज्यूम ए फैक्ट ओके जोठी अधिनियम रे लेखाई थिबो कि ए फैक्ट ता कोर्ट को प्रिज्यूम ओके प्रिज्यूम करि परिबे राइट तो तांको पाखे दीटा ऑप्शन अछि जेतु डिस्क्रिशनरी एबे डिस्क्रिशन रे मु कोन करी मु आइदर जिंसडा करिवि नले करिवि ठीक अछि तो कोर्ट से हिसाब रे इधर से फैक्ट को प्रिज्यूम करिवे एबे आपण जो माने नुवा प्रिपेयर करछन भाबुथिबे प्रिज्यूम कोन तो मु आसीबी पूरा डिटेल रे तार एटिमोलॉजिकल ओरिजिन्स को जिबा एटिमोलॉजिकल ओरिजिन्स माने तार ईच वर्ड रो सब रूट वर्ड्स थाए तो से प्रिजम्पशन आसीची कोठु ओके से कांसेप्ट बुझिबा जनरल इंग्लिश रे बुझिबा तापरे हमें तार लॉ रे कोन तार माने सेटा बुझिबा सो इट मे इधर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूफ तो इधर से रिगार्ड करिवे कि सेटा भाबी देबे कि एटा प्रूव्ड अछि ओके अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड ठीक अछि तो गोटे फैक्ट जदी गोटे पार्टी से तार डिस्प्रूव करि पाउछ ओके ताले ऑफ कोर्स द कोर्ट जहाँ जदी प्रिज्यूम करिथिबे गोटे फैक्ट को और सेटा डिस्प्रूव हे गला ओके दैट इज अ सेपरेट मैटर राइट त माने से फैक्ट ता कोर्ट प्रिज्यूम करथिले बट सेटा आर पार्टी जे अछि ओके कि जो पार्टी ताको डिस्प्रूव करे पे चाहूची से सक्सेसफुली ताको डिस्प्रूव कर देछि अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव तो जदी डिस्प्रूव न होला ताले कोर्ट प्रिजम्पशन रे ही चलिबे कि सेटा ठीक अछि ओके से फैक्ट ता प्रूव हे कि अछि एटा हला फर्स्ट part which the barrack tells you or may call for proof of it अच्छा कोड जदी सैटिस्फाइड नांती नहीं हमें एटा प्रिज्यूम करिया पई जेहेतु हम डिस्क्रिशन अछि तो एटा लागुनी कि यू नो इट इज वर्दी ऑफ सच प्रिजम्पशन तो ताकू प्रिज्यूम करिया पई प्रूफ देखा ठीक अछि ब्रिंग प्रूफ ओके तो प्रूफ आसिला परे देन द कोर्ट में ओके सेटा ताकू भाबी परिबे प्रिज्यूम करि परिबे तो ए दीटा जिंस हे पारे इट में इधर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड प्रिज्यूम करिवे कि एटा प्रूव हे जाईची ओके until and unless it is disproved or it may call for proof of it ए दीटा जिंस कोर्ट करि परिबे ओके फॉर एग्जांपल गोटे पर्टिकुलर केस अछि से केस भितरे मु या प्रूव करिया पई चाहूची कि अमुक दिन मु ट्रेन रे ट्रैवल करथुली ठीक अछि तो मु गोटे ट्रेन टिकेट देखेली जोथरे सेटा लेखा आइची तापरे आउ गोटे कोन ता कोंती जो रोल ऑफ द पैसेंजर्स जोथरे टीटी साइन करूची कि आजिकल तो टैब रे से माने ओके करचंती एमती दी तीनटा प्रूफ आनी कि देखे ओके तो प्राय कोर्ट से थरे जानी गले कि हां ये बोधे ट्रैवल करी एमती भी पर मु आउ काहू पठे देथि ठीक अछि जदी सेटा डिस्प्रूव होउनी आरो पार्टी सेटा डिस्प्रूव करूनी ऑपोजिट पार्टी ताले किछि प्रॉब्लम नहीं कोर्ट से माने कि चलिबे ओके कि ये ट्रेन रे जाउथला काहे ना ये एते ओरे जिंसो देलानी ठीक अछि किंतु सेई टाइम रे जदी ऑपोजिट पार्टी गोटे मोर देखिए दबो कि सेम टाइम रे ए बाबू ए एटीएम रे थिले एटा सीसीटीवी रो कैमरा सेठू 500 किलोमीटर दूर रे थिले डिस्प्रूव हो गला ओके आउ से प्रिजम्पशन रहिबन राइट
एटा हला केस 1 रो एग्जांपल केस 2 रे कोर्ट ए सब देखिला परे तथापि तांको लागु जे एडा तो खाली टिकेट उडा देइछो ओके ई जो लिखाई छी आपण को ना आपण एक्चुअली जाइथिले कि हम केम जानियो ओके तो अच्छा आमे ता पे अलगा प्रूफ दगा फोन फोन तो नहीं जाइथिले ना तो फोन कॉल ओके ट्रैक करिकी आपण को जो जीपीएस लोकेशन अछि पोजीशन अछि तार गोटे ओके प्रूफ से मगेबे आपनकर टेलीकॉम कंपनी फॉर एग्जांपल मु कहूँ ओके कहीं कोर्ट सैटिस्फाइड हेलेनी कोर्ट कर माइंड रे किछि अलगा अछि तो से प्रूफ ओके से प्रिजम्पशन नबा पई प्रूफ आउरी प्रूफ मागी दे परम बुझ पले सो दीज आर सर्टेन थिंग्स द कोर्ट मे प्रिज्यूम समथिंग ओके नाउ लेट अस कम टू प्रिज्यूम माने कोन प्रिज्यूम इंग्लिश रे प्री प्लस अज्यूम मिसेले प्रिज्यूम होची प्री माने कोन कोनोसी गोटे पॉइंट ऑफ रेफरेंस पूर्वरु जो कामटा हेतिबो ओके आपण दे बहिटा पढुचंदी ठीक अछि प्रथमे आपण कोन पढुचंदी प्रीफेस माने कोन ना एक्चुअल बहिटा पढिबा आगुरु सेठी ऑथर की पब्लिशर आपण को कहउचंदी कि बहिटा काई लेखा हिची और बहि रिलेटेड जा जा कहउछ राइट कॉन्स्टिट्यूशन को चलंतु आपण प्रीएम्बल कहउचंदी प्रीएम्बल ठीक अछि तो सेठी प्री लागुची ता माने एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन ता पढिबा पई ओके पढिबा आगुरु आपण तार समरी ता पढि दउचंदी कि ता ऑब्जेक्टिव ता स्पिरिट ता पढि दउचंदी ओके प्रीएम्बल टा अरे कॉन्स्टिट्यूशन में तो डिटेल्स पढिबा प्रीएम्बल टा कोठी अछि कॉन्स्टिट्यूशन जदि हम पढिबा पूरा प्रथम रे अछि ओके किंतु तार गोटे इंपोर्टेंट फैक्ट हला सेटा सबुटु लास्ट रे ड्राफ्ट करा हितला पूरा कॉन्स्टिट्यूशन सरिला तापरे प्रीएम्बल रो ड्राफ्टिंग हला बुझि पाले किंतु सेटा प्रथम रे अछि प्रथम रे पढुछन ठीक अछि तो एनीवे प्रिज्यूम माने बुझी पारले प्री प्लस अज्यूम सो किछि गोटे अजम्पशन आपण करछन सेटा हला प्रिजम्पशन एबे लॉ को आसी गले प्रिजम्पशन रो माने हला कि गोटे जिंस जोटा कि सेही पॉइंट रे प्रूव हेनी ठीक अछि किंतु आपण ताको कंसीडर करछन कि सेटा प्रूव्ड अछि ओके तो आपणकर पॉइंट ऑफ व्यू टा केते बेले भांगिबो आपणकर माने कोट करो कि जदि आरो पार्टी सेटा डिस्प्रूव कर दो ओके तो प्रिजम्पशन गला किंबा कोर्ट को जदि लागु कि नहीं किछि यदि असुविधा अछि से तापर पुनी ताको आउरी प्रूफ मगे परिबे ओके तो प्री प्लस अज्यूम इज प्रिज्यूम ओके से जिनसटा आपन को मन रखिबार अछि प्रिजम्पशन माने एट द पॉइंट ऑफ प्रिजम्पशन नो प्रूफ हैज बीन गिवन ठीक अछि जनरल लाइफ रे देखिले सपोज आपनकर फ्रेंड जने कॉल करचंदी आपन को से गोटे बहिटे आपन को ओके पठै चंदी आपन पाखरु रेलवे स्टेशन रे तांकर लेट्स से गोटे कलीग जे असिस्टेंट प्रोफेसर अछंदी सी आसी की से बहिटा आपन को देबे आपन तांके केबे देखि नांदी ओके सपोज सो चारटा लोक आपन को पाखकु आछन सेम टाइम रे ठीक अछि जणे पूरा प्रथम तीनटा बटन खोलिकी ओके आउ माने देखा जाउन कि से असिस्टेंट प्रोफेसर भरिया आपण प्रिजम्पशन हला ये नुह असिस्टेंट प्रोफेसर काना से पर्यंत प्रूव हेन यू डोंट नो आउ जणे पूरा सूट बूट पिदि के आछुचंदी लागु कि हां ये एकेडमिया रो ही हेतिबे ठीक अछि आपण प्रिज्यूम कले से सेटा हला प्रिजम्पशन ठीक अछि काहे कि ना पॉइंट ऑफ प्रिजम्पशन बेले तारो किछि प्रूफ न थाए ओके आउ जणे बाबू से किछि ड्रेसिंग सेंस नाही तांकर ओके लंबा दाढ़ी अछि माने ताको देखिले आपण बाबुतिबे कि से बोधे कोन बोलते चा पा दवा पे आछंदी कोन ठीक अछि आउ पाखुको आसी कि तापर से कहउछंदी बाबा बहिटा नियो तो आपण ताप सेठी प्रूफ मिलला आपण कि कोन एक्चुअल जिंसटा किंतु से पर्यंत आपण भाबुतिले कि सूट बूट वाला बाबू से हेले आपण को बहिटा दवा पे आछन बुझि पाले तो सो दैट इज प्रिजम्पशन राइट प्रिजम्पशन जते बेले आपण करूछन तो एठी मु लॉ हिसाब रे कोन एठी जनरल लोक हिसाब रे कहूछ ओके प्रिजम्पशन जो हुए सेटा एमती फ्लूक रे हुएनी माने जहा जेमिति भी इच्छा आपण कोन पे प्रिज्यूम कले से सूट रे जे आछंती लोक सेही बही नै कि आछंती काहे कि ना आपणकर माइंड रे
किछि गोटे रैशनल डिसीजन मेकिंग चलथिला कि जे आसीबे सी जण असिस्टेंट प्रोफेसर ओके मे बी यूनिवर्सिटी रो आसुचंती तो तांकर ड्रेसटा से ड्रेस सेंसटा एमती थिबो ओके तो आपण कोन किछि गोटे लॉजिकल पॉइंट्स रे एटा आपण गोटे कंक्लूजन मुंडर बाहर कर दैचंती ओके कि ये हेले हमर जे सूट पिंदी के आछंती से मो बहि नै के आस्थिले ठीक अछि तो एमती एमती नो कि जस्ट खाली जहां भी हो विदाउट एनी रैशनैलिटी विदाउट एनी रीजनिंग आपण प्रिज्यूम करचंती प्रिजम्पशन रो भी किछि रीजनिंग थिबो लॉ रे भी से okay that presumption cannot just come from anywhere okay there has to be some logical reason behind it बुझी पाउछंती तेनु एटा हला this is the entire concept of presumption ठीक अछि एबे आपण पचरबे प्रिज्यूम करबा कोन दरकार सब तो आपण प्रूफ करिवे कोर्ट रे ठीक अछि अच्छा सेमिति जदी करिवे ताले जो केस ऑलरेडी 12 वर्ष होउची मे बी से 20 वर्ष 25 वर्ष नै जो काना सब दिन मते प्रूफ करिया पड़ियो ठीक अछि जो गुडा क्वाइट ऑब्वियस जिंस से गुडा हमें प्रिज्यूम कर परिबे राइट अनलेस ओके सेटा डिस्प्रूव हे जाउछ ओके सो प्रिजम्पशन रो लॉ रे सबुठु बड़ रीजन की सिग्निफिकेंस हैला जो ऑब्वियस जिंस गुडा किंबा जो जिंस गुडा जो फैक्ट्स गुडा ओके आपण नॉर्मली आपण को ए जणा पड़ती कि ओके एटा एआई हेइथिबो गोटे सेन पर्सन एसएनी ओके जा मन गुण ठीक थिबो ओके रीजनेबल लोक सी जो हिसाब रे भाबिबो ठीक अछि तेनु से प्रिजम्पशंस गुडा को नेले आपणकर केसटा टिके जल्दी सरी जे परिबो सबु जिंस को प्रूफ करिया पे पड़ियो ओके सो दैट इज द कांसेप्ट ऑफ प्रिजम्पशन ओके तो प्रथमे आमे तारी ऊपर किछि देखिबा प्रिजम्पशन ओके प्लीज टेक द हेडिंग एज प्रिजम्पशन तापरे आमे देखिबा तार टाइप्स कोन प्रिजम्पशन ओके ऑफ फैक्ट एंड प्रिजम्पशन ऑफ लॉ ठीक अछि सेटा आमे देखिबा टाइप्स ऑफ प्रिजम्पशन जोटा मु कहली एबे ओके तापरे जो टाइप्स ऑफ प्रिजम्पशन तार किछिटा आमे कैरेक्टरिस्टिक्स देखिबा okay आउ फाइनली वी विल हैव सम क्वेश्चंस ठीक अछि गोटे क्वेश्चन हमें लिखिबा 5 मार्क क्वेश्चन टे आउ एमसीक्यू 5टा हमें आज जहा पढिलु ता ऊपर करी ओके सो प्लीज टेक डाउन प्रिजम्पशन in evidence law a presumption is an inference or assumption in evidence law a presumption is an inference or assumption underline inference or assumption से phrase टा को underline करो that a court accepts as true that a court accepts as true that a court accepts as true until it is rebutted by evidence until it is rebutted by evidence to the contrary ओके तो आम जोटा कहते एम टा ताले कौन ओके नेक्स्ट पॉइंट the main objective of presumptions in legal proceedings the main objective of presumptions in legal proceedings is to reduce the burden of proof is to reduce the burden of proof
on the party, on the parties, comma, thereby, thereby saving precious court time, thereby saving precious court time, okay, saving precious court time. সময়টা ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ନହେଲେ ଯାହା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗୁଡା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୁଫ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯଦି just imagine what will be, okay, the situation, okay, ଆପଣଙ୍କ କେସ୍ ଲୋଡ ଆହୁରି ବଢିଯିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ତ ଏଟା ଆମେ ଜେନେରାଲି ପ୍ରିଜମ୍ପସନ କଣ ସେଇଟା ହିଁ ଲେଖୁଛୁ। they are foundational, they are foundational মানে that presumption is one of the basic pillars, okay, of evidence. They are foundational in both civil and criminal cases. They are foundational in both civil and criminal cases, guiding how evidence is presented and evaluated. In both civil and criminal cases, guiding how evidence is presented and evaluated. Okay, এইটা ହେଲା ଆପଣଙ୍କର presumption ର what is presumption, okay, এটা definition କହିପାରିବେନି, basic concept of presumption ଆପଣ କହିପାରିବେ, ଠିକ ଅଛି। so ତ କିଛିଟା ଆମେ examples ତାର ଦେଖିବା। examples ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଆମର basic types କଣ, okay, presumption। so overall without going into the statute ଆପଣ କହିପାରିବେ କି କିଛିଟା presumption ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ତାକୁ disprove କରିପାରିବେ ଯଦି evidence ଆପଣ present କରିଦେଲେ କି ଏଟା ତାହେଲେ rebut ହେଇଯିବ ସେଟା, okay, so they are called rebuttable presumptions, presumptions which can be rebutted, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇପ ର ରହିଲା ତାର ଅପୋଜିଟ irrebuttable presumptions, ଯୋଉଟା ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିବା conclusive proof କୁ ଆମେ କହୁଛୁ, okay, so rebuttable and irrebuttable presumption। ସେମିତି category wise ଦେଖିଲେ କି ଆମେ ଯଦି ଆହୁରି details ରେ ଯିବା ତାହେଲେ many other types of presumptions are also there जोटा कि specifics रे ଆମେ ଯଦି ଯିବା, but overall କହିବାକୁ गले जोटा ଆମେ ଏବେ जो level रे ଆମେ ଏବେ पढुछु generally ଦି प्रकार presumption आपण पाइबे, गोटे rebuttable presumption, okay, आ गोटे हैला irrebuttable presumption, ठीक अछि। तापरे अंडर बीएसए और अंडर आईईए, ठीक अछि, ताको केमिति डिवाइड करा हबो that we will see later, हैला। so take down types of presumptions, give the next heading as types of presumptions, types of presumptions, okay, types of presumptions in law which we are talking about। तो प्रथमटा हैला, okay, जोटा कि आपण रिबट कर दे परिबे, ठीक अछि। so rebuttable presumption, first take down rebuttable presumption, okay, rebuttable presumptions, okay, so এটা কোন rebuttable presumptions, so take down these are assumptions, these are assumptions that the law accepts as true, these are assumptions that the law accepts as true
until evidence is presented, until evidence is presented to disprove them, to disprove them. Okay. Continue. They place the burden on the opposing party. ताको ही रिबट करिवार अछि ना, डिस्प्रूव करिवार अछि. They place the burden on the opposing party to present evidence, to present evidence challenging the presumption. To present evidence challenging the presumption. Okay. Examples include माने rebuttable presumption रो बहुत गुड एग्जांपल ले परिबो. Examples include presumption of innocence. मैं जानछु एटा ओके गोटा फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ कोन कि individual is presumed innocent, okay, until he is proven guilty, right? So this presumption of innocence is rebuttable presumption. जदि आपण प्रूफ दे देबे ताको डिस्प्रूव कर देबे कि नहीं से ओके इनोसेंट नुह से करिछि एटा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एटा प्रूफ कर देबे ताले तार कन्विक्शन हे जिवो. ओके ताको जदि हमें पर्टिकुलर एग्जांपल्स रो भी देख परिबा. ओके जोटा कि हमर आर्टिकल 20 रे अछि. ओके द प्रिवेंशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन फॉर एग्जांपल, safeguards जो हम कॉन्स्टिट्यूशन दे कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन अगेंस्ट it, right? So सेटा कोन that reinforces the idea, okay, that कोन पई आपण जणको सेल्फ इंक्रिमिनेशन रो प्रोटेक्शन काई की दोचन. ओके आपण प्रिज्यूम करी चलछन से इनोसेंट, ताको प्रेशर पका हबो ताल से निज अगेंस्ट रे कहबो. ओके बट सेही जगह ताको प्रोटेक्शन दबार अछि. ओके तो गोटे एग्जांपल एटा नै परिबे प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस. आ गोटे हला प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी. दीटा एग्जांपल लेखन. रिबटेबल प्रिजम्पशन बहुत एग्जांपल अपन लिखि परिबे बट दीटा सिंपल एग्जांपल्स लेखन. रिबटेबल प्रिजम्पशन अंडर रे प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस आउ प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी. लेजिटिमेसी कोन? Okay, presumption of innocence, presumption of legitimacy. Presumption of legitimacy कौन? Okay, अच्छा a child गोटे couple अछन तांकर गोटे पिला गोटे हैला, right? So it is generally presumed that say couple रे पिलाटा means that particular male, okay, is the father of that particular child. सेटा आपण presume करछन. But जदि DNA टेस्टिंग रे अलगा किछि जणा पड़ला, ओके कि तार पैटर्निटी डिस्प्यूट अछि, राइट, ही इज द चाइल्ड ऑफ सम अदर मेल, तो सेही जगह रे आपण जहा प्रिज्यूम करथिले सेटा इट हैज बीन डिस्प्रूव्ड. ओके बट प्रिजम्पशन होची लेजिटिमेसी रो. ओके सो दिस इज अनदर एग्जांपल प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी. एगुडा सब रिबटेबल प्रिजम्पशन. आपण प्रूफ देकी ताको रिबट कर दे परिबे, ताको डिस्प्रूव कर दे परिबे. ओके तो ये हला रिबटेबल प्रिजम्पशन. एबे हमें लॉ को जाइनु माने इंडियन एविडेंस एक्ट की भारतीय साक्ष्य अधिनियम को जाइनु. ओवरऑल लॉ रे ओके प्रिजम्पशंस कोन केमती केते प्रकार रो सेटा में देखु. तो जदि रिबटेबल प्रिजम्पशन अछि तार पुनी ऑपोजिट टा भी रहइबो इरिबटेबल प्रिजम्पशन, जाकू हमें कंक्लूसिव प्रूफ हिसाब रे धरु और इट इज कंक्लूसिव प्रिजम्पशन. ओके सो नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रिजम्पशन लिखंतु इरिबटेबल. और conclusive.
right? So obviously it apna, it's obvious that you cannot, okay, disprove it in that sense. Okay, so lekhandu, these are assumptions that cannot be contested or disproven by any evidence. These are assumptions that cannot be contested or disproven by any evidence. Cannot be contested or disproven by any evidence. Continue. Once established, comma, they are accepted as absolute truth. Once established, they are accepted as absolute truth within the legal framework. Absolute truth underline karon. Once established, they are accepted as absolute truth within the legal framework. बुझिपारे. So आर एग्जांपल्स कौन दबा? गोटे हला you can take presumption of death. Okay, जेमति कि आमे पढिबा आगु कि गोटे लोक 7 years completely incommunicate होच. ओके, किछि कम्युनिकेशन नाही, कहा संगे कम्युनिकेशन नाही, तार किछि ट्रेस भी नाही. ओके, 7 years पर्यंत किछि तार खोज खबर मिलुनी. तो लीगली, okay, the courts will presume and the authorities will presume that he is dead. ठीक अछि. तो कोनोसी भी आपण जदि प्रूफ दउचंती कोन सेटा पढिबा हमें जेतले से सेक्शन टा को डील करिबा. ओके, तो जनरली इट इज कि तार डेथ टा जदि 7 वर्ष हला से कोनोसी कहारो भी कांटेक्ट रे नाही, तार किछि ट्रेस नाही, ताले प्रिज्यूम टू बी डेड. ठीक अछि. तार मेन जिंस कोन ना, जदि सेमती व्यवस्था हला, सेमती जदि होउची, आपण से प्रिजम्पशन टा नेले, लाभटा कोन होउची ना, लॉट ऑफ लीगल प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व. ठीक अछि. तो तार इनहेरिटेंस रो इश्यू आसी गला, तार जो सब इंश्योरेंस अदर थिंग्स, ओके, जोटा ता फैमिली की हेल्प करियो. So lot of legal issues will be addressed in this case. Okay, so एटा गोटे एग्जांपल हे परिबो. आउ सैनिटी रही परिबो, प्रिजम्पशन ऑफ सैनिटी. तो ए दुटा एग्जांपल आपण एथरे दे परिबे, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ और प्रिजम्पशन ऑफ सैनिटी. ओके, तो लॉ टा कोन जनरली एया प्रिज्यूम करूची कि समवन इज सेन. ठीक अछि. तो जोड़ा इनसैनिटी आमे ताको पढिबा, से टाइम रे आमे ए जिंसटा देखिबा. लॉ जनरली से बिलीव करिवो कि ओटे लोकटे सेन. ठीक अछि. आउ जदि आगु को जाई कि प्रूफ दिया हला, ओके, कि लोकटा सेन नुह, ठीक अछि, ताहले दैट विल बी एस्टैब्लिश्ड. ओके, एंड वंस इट इज एस्टैब्लिश्ड, तो तापरे आ ताको चेंज करी हबनी. बट ए जो एग्जांपल टा मुनेली, आरो किछिटा आमे कोन एक्सेप्शंस देखिबा, जोटा कि हमरो लॉ रे दिया छै. सपोज गोटे पर्टिकुलर एक्ट कला बेले, ओके, जने इनसेन अछि, बट तापरे फिर से सेन ही जाउछ. ओके, जदि सेमती केसेस आसिला, राइट, तो there we have to treat it little bit differently. So once we go to that point, but overall ए दुटा एग्जांपल अपन नै परिबे, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ आउ प्रिजम्पशन ऑफ, ओके, सैनिटी. ठीक अछि.
Example, presumption of death and presumption of sanity. Okay, so जदि आमे देखिबा एठी आमे जो generally गोटे आमे क्लासिफिकेशन कलु, बट आमर स्टैट्यूट हिसाब रे जदि आमे क्लासिफाई करिबा इट विल बी लिटिल बिट डिफरेंट. ठीक अछि, जोटा कि गोटे डायग्राम साहाय्य रे आमे करि परिबा. सो दिस डायग्राम इज इंपोर्टेंट. एमिति किछिटा इधर आपण जो हमर पीवाई क्यूज रे जो से डायग्राम सुडा दिया होची, ओके, डायग्राम टा केमती करिवार अछि, सेंट्रल नोड कोन सेमिति कर परिबे और सिंपल डायग्राम्स करि परिबे. जेमति एठी आपण जदि प्रिजम्पशन of fact ki presumption of law upare questions asila, then this diagram has to be done. Okay, so just take down this diagram first, tapare ame tara detailed analysis ko jiba. Okay, so we are dealing with the types of presumptions. ठीक है, ताले ऑब्वियसली प्रथम जोटा में फर्स्ट मेजर तार डिफरेंस होची कि गोटे आपण हला प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट आ गोटे हला प्रिजम्पशन ऑफ लॉ. तापर जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, ओके, सेटा इधर आपण को रिबटेबल हबो कि इरिबटेबल हबो. ओके, सो ओके, आकु जदि हमें आमर अधिनियम किंबा आगुरु इंडियन एविडेंस एक्ट, ओके, ता संगे रे हमें कनेक्ट करिबा जो टर्म टा आमर अधिनियम किंबा इंडियन एविडेंस एक्ट रे दिया हितिला, तो दैट आल्सो विल सी. सो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स, ओके, जोटा कि हमें देखुथु एबे जोटा हमें देखिलु, ओके, जो थ्रू हमें स्टार्ट कलु ए डिस्कशन टा, दैट इज मे प्रिज्यूम. ठीक अछि, तापरे प्रिजम्पशन ऑफ लॉ रे जदि हमें देखिबा जोटा हमें रिबटेबल प्रिजम्पशंस कहउछु, सेटा हला शैल प्रिज्यूम. आउ इरिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जोटा सेटा हमें कहउछु हमर स्टैट्यूट्स रे कंक्लूसिव प्रूफ. ओके, तो ये सब जिनस हमें डिस्कस करिवे. राइट, ए डायग्राम टा कर दियो. Done, all of you have finished. So next heading, take down presumption of fact. Now natural presumption भी कहूँ जोटा आपण ऑब्जर्व करूचंदी, ओके, नेचर रे. राइट, सो नेक्स्ट हेडिंग, टेक डाउन presumption of fact. Presumption of fact. ओके, तो आर आपको नेचुरल प्रिजम्पशन भी कहउचंदी आपण. ओके, सो एटा कोन ना जनरल आपनकर सर्कमस्टेंसेस, नेचुरल प्रोसेसेस, ओके, जनरल कॉमन सेंस को नै कि आपण प्रिजम्पशंस ऑफ फैक्ट आपण से फैक्ट आपण प्रिज्यूम करूछ. ओके, आरो लीगल बेसिस किछि नै. ठीक अछि, आरो लीगल बेसिस किछि नै. राइट, सो टेक डाउन a presumption of fact, a presumption of fact, comma, also known as natural presumption.
A presumption of fact, also known as natural presumption, also known as natural presumption, is an inference that court may draw is an inference that court may draw from the circumstances of a case, from the circumstances of a case. तो circumstances of a case टाको अंडरलाइन करंतु, based on logic, based on logic, human reasoning, based on logic, human experience, okay, logic, human experience, and common sense. And common sense. तो आरो law रे सेमिति किछि foundation नहीं. So continue. These presumptions are not mandated by law. These presumptions are not mandated by law. Not mandated by law, but arise from factual context, but arise from factual context, but arise from factual context presented during the trial, presented during the trial. ओके, सर्कमस्टांसेस को देखिकी नेचुरल प्रिजम्पशन जोटा आपण गोटे कहि परियो. ओके, कोन बहुत गुड एग्जांपल्स नेबे जोटा आखि की देखा जाउची हो, जोटा आपण आपणकर ह्यूमन एक्सपीरियंस से फील कर पाउछन, राइट. फॉर एग्जांपल कार कोन गोटे चोरी हे जेछि, से मोबाइल चोरी हे जेछि, गोटे ग्रीन कलर मोबाइल आपण गोटे लोक पाखरे आपण गोटे वर्कर पाखरे देखछन ग्रीन कलर मोबाइल ता तार आगुर नथला सेटा अछि. ओके, तो आपण प्रिज्यूम कले एटा ही ये नै. ओके, बट सी यदि रिसीप्ट रिसीप्ट देखेला कि एटा मो फ्रेंड रो आनछि कोन सेटा दैट इज अ सेपरेट मैटर. बट नेचुरली जो जिंसटा आपण ऑब्जर्व करिकि इन्फरेंस टा बाहर करछन्ती दैट इज प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट. तार लॉ रे किछि बेसिस नै. ओके, एबे से सतरे नै छि कि नै आपणकर आपण केमिति लॉ तो आपण को सेटा प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट रे आपण नौचन्ती कोन ना जा आपण को देखा जाउछि सेटा आगु को. ओके, anything which is natural, ठीक है सर. So that is one example. Any example you can give जोटा आपण एक्सपीरियंस रे आपण इन्फर करूछन्ती, कॉमन सेंस रो आपण इन्फर करूछन्ती. ओके, सो फॉर एग्जांपल आपण फ्रेंड से कथा होतले, से कहतला कि से ए पिलाटा मते बहुत हैरान करछि, से तार गोटे पर्टिकुलर नुआ गोटे जिनसटा आनछि सेटा मते सेटा यूज करके से हैरान करछि. ओके, नेक्स्ट डे आपको जाना पड़ला कि से जिनसटा गायब हो जाइछि, कि सेटा भांगी जाइछि, कि केता को छिंडे देछि, जा भी हो डिस्ट्रॉय हो जाइछि. जो लोक पाखर सेटा थिला सी आसी कांदुछि स्कूल रे. फॉर एग्जांपल आपण को फ्रेंड गोटे दिन आगु जिनसटा कहिसंती, तो आपण सेठी प्रिज्यूम कले कि ये बोधे इधर मो सांगो निजे करछि नले से काडू करेछि. यू डोंट नो तार किछि सेमिति आपण पके प्रूफ नाही कि लॉ रो किछि बेसिस नाही. बट आपण जा ऑब्जर्व कले, जा जानिले, आपण को एक्सपीरियंस रे आ लॉजिक की मिसै की ओके आपण गोटे प्रिजम्पशन आनले. बुझि पाले तो. नाउ लेट अस गो टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स. सो हेडिंग नियंतु
characteristics of presumption of fact. Okay, characteristics of presumption of fact. ମୁଁ short ରେ ଲେଖି ଦଉଛି so that we can save time. Okay, ମୁଁ actually ଏଟା dictate କାଇଁ କରୁଛି, ଗୋଟେ କାରଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିଡ ଟା ବି ବଢିବ ଆଉ ନୋଟ୍ସ ଟା ବି ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଆଉ ପ୍ରପରଲି ବନେଇ ପାରିବେ. ଓକେ, ମୁଁ କାଲି କ୍ଲାସ ରେ କହିଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଗର କ୍ଲାସ ରେ ବି କହିଥିଲି, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଭିନ୍ ଆଡମିଟେଡ୍ ପିଲା ଯୋଉମାନେ ଗ୍ରୁପ ରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ମାସେ କି 15 days 10-15 days ଆଗରୁ ବି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଜଣେଇଛି ଏଇଟା ପୁରା ଡିଟେଲ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି. ଓକେ, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆମ ପ୍ରିପାରେସନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ. ଓକେ, କଣ ପାଇଁ ନା ସେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କଣ କହିବେ, ମୁଁ ଏଟା ଗ୍ରୁପ ରେ ଡିଟେଲି ଡିସ୍କସ୍ କରିଛି. ଓକେ, ଇନ୍ ସର୍ଟ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବି, ଯଦି ଆପଣ ତା ପାଇଁ ଅଟକିଛନ୍ତି କି ଏପ୍ରିଲ 1 ରେ କି କଣ ହବ କି ଆଉ ସେଟା ହେଲା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ପଢିବି, ତାହେଲେ କମ୍ପିଟିସନ ର ଲେଭେଲ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି. ଠିକ ଅଛି, फाइनाली ଏହା ହିଁ ବାହାରିବ କି କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହବାର ନାହିଁ, କି ଯଦି ହବ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ ଟାଇମ ଦିଆଯାଇଛି. ଓକେ, କାହିଁକି ଚେଞ୍ଜଟା ହବନି ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ରେ କହିଛି. ସର୍ଟ ରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବେଶୀ କିଛି କହିବେନି, ୟୁ ଗୋ ଟୁ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ. ଓକେ, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ରେ କ୍ଲିୟର ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ତ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବାହାରେ ଯାଇ କିଛି କରିବେନି. ଓକେ, ଆପଣ ଯଦି ଏସେନ୍ସ ବୁଝିଗଲେ ଆର୍ଟିକଲ 234 ର, ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କଣ କହୁଛି କୋଉଠି କହୁଛି ଏଟା ଦରକାର ପଡିବନି. ନମ୍ବର 1. ସେକେଣ୍ଡ, ଫ୍ରମ ଦ सोशल कॉन्टेक्स्ट. ओके, देखो बहुत गुडे स्टेट गवर्नमेंट्स क्लियर कर देइछन्ती कि हमको एटा दरकार, हमको एटा दरकार नहीं एक्सपीरियंस टा. ओके, करंट स्टेट गवर्नमेंट सेटा पब्लिकली क्लियर करनांती. व्हाट एवर इंफॉर्मेशन आई हैव आई कैन से दैट, आउ द रीजनिंग भी मु कहि दउची. ओके, गवर्नमेंट कौन करिए न करिए सेटा तो अगेन सेटा गोटे सिंस आई एम प्रिवी टू सम इंफॉर्मेशन, तेणु सेटा मु एते डिटेल्स से कोनी, बट अपन निजे ही बुझ पारिए. हमरो एठी ओके बहुत पिला, ठीक अछि, एस्पायरिंग पिला जो माने लॉ पढुचंती, हमरो सब्सटेंशियल पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब रो पॉपुलेशन हमरो ओडिसा रे ओके सब्सटेंशियल अछि. ओके, तो एई सब जिंस भी कोर्ट देखंती. आउ 234 आर्टिकल 234 अंडर रे पावर काहार अछि एतरे, दैट इज क्लियरली गिवन. ठीक अछि, कोर्ट कैन नॉट मेक ए ब्लैंकेट रूल कि पूरा इंडिया सारा ओके एमिति एमिति आपण करंतु. से सजेशन टा देबे. इट अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन द स्टेट गवर्नमेंट. ओके, जोटा कि 234 रे कहूची कि डिस्ट्रिक्ट जज को छडा बाकी जो आपण को लोअर जुडिशियरी रे जो माने सब ताका अपॉइंटमेंट टर्म्स कंडीशंस एक्सेट्रा जा भी सेटा गवर्नर डिटरमाइन करिवे. गवर्नर माने किए? ओके, ऑब्वियसली द गवर्नर ओके acts on the recommendation, aid and advice of the council of ministers. ठीक है, तो लेजिस्लेचर सेटा डिटरमाइन करिवो विथ आउ कोन को होई 234 रे आउ दुटा बॉडीज कर से माने कंसल्टेशन करिवे तांको संगे. गोटे हैला सेई स्टेट रो हाई कोर्ट संगे, आउ गोटे हैला आपनकर ओके दैट इज द से पर्टिकुलर जो स्टेट रो अछि तार जो पब्लिक सर्विस कमिशन संगे. एटा 234 रे दिया अछि. हैला एठू जहा बुझे କଥା आपण बुझंतु. बट मु खाली लास्ट गोटे ही पद कहबी कि जदि आपण प्रिपरेशन न करिकी बसिबे एबे मासे आउ फटाफट तापर परीक्षा हबो, ऑलरेडी साइकिल डेरी होउची. ओके, नॉर्मल साइकिल हला बाय डिसेंबर सिविल जजेस शुड टेक ओथ. ओके, से माने जॉइन कर जिया दरकार, आगु लोटा होतला. ठीक अछि, तो एबे हमें केते मास डेरी रहउछ. ए करंट बैच ऑफ सिविल जजेस मोस्टली अप्रैल मे रे जॉइन करे. हैला 4-5 मास डिले रे अछंती, तो सब से माने चेष्टा करिवे ओपीएससी की जति जल्दी जल्दी जिनसटा करिया पे. ओके, तो एटा मु फाइनल टाइम कहूची. डिटेल्ड एनालिसिस मु मो वॉइस नोट रे देइथिली ग्रुप रे. ओके, आपण प्रिपरेशन करंतु. ठीक अछि, जस्ट प्रिपेयर. आउ काहे कि एटा इंप्लीमेंट होबा बहुत डिफिकल्ट होबो, सेटा शेट्टी कमिटी रो रिकमेंडेशन से, ऑल्दो से माने बहुत गुडे रिकमेंडेशन देथिले. ओके, सैलरी हैला, सर्विस कंडीशन हैला, प्रमोशनल एस्पेक्ट्स हैला, लोअर जुडिशियरी रो ए जे जिंसटा से क्लियरली सेटा आउ तापरे सेटा सुप्रीम कोर्ट भी मानिथिले परे जाई. ओके, 2000 से जो आपनकर
এই जो रिक्वायरमेंट ऑफ यू नो द प्रैक्टिस ओके सेटा सुप्रीम कोर्ट जोड़ा रेकमेंड करले तापर सेटा पुनी ओवरटर्न कले ओके बट एनीवे ता ऊपर को जीवानी इन शॉर्ट कीप प्रिपेयरिंग ओके एमती अपॉर्चुनिटी आपण को मुहरु के छड़े दे कि नियंती ओके ऑल्दो सेम एग्जांपल नुह तथापि एनालॉजीटा दउची सिविल सर्विस रे जेतेबेले पैटर्न चेंज होला आज पर्यंत कंपनसेटरी अटेम्प्ट्स मिलुची पिलां okay if the pattern suddenly changes obviously there has to be compensatory attempts okay जो पिला लास्ट 2 इयर्स हैला से तकर एलएलएम कॉलोनी किछि अलगा किछि करनांती से प्रिपरेशन करछंती कोन पई ना एई जिंसटा एते दिन हैला चली आछि आपण जदी ताकू चेंज करिवे इधर ताकू आगुर इन्फॉर्म करिवे कि एई 3 वर्ष नेक्स्ट 3 वर्ष पर एटा लागू हबो ताले फेयर चांस मिली गला समस्त ओके बट एनीवे मु एति खाली कहबी जहा थिला ओके एबे मु तो पूरा फोर्स रे कहि परिबी से ही रहइबो 99% भाबंतु से ही रहइबो ठीक अछि सर काहे ना मु सर जति जो माने कहबी कि सर जो माने सब बॉर्डरलाइन रे अछंती हमर एज बार भी अछि ना तो जो माने सब अछन जदी 3 इयर्स एबे संगे संगे इंप्लीमेंट करि देबे तल समान भी तो डिस्क्वालीफाई हे जे आ तो 3 वर्ष पर समान भी तो अप्लाई भी करि परिबेनी एलिजिबल ही रहबेनी तो सेमानक पई भी तो भाबी कि किछि करिवे ना समाने नहीं नहीं सेटा से माने कोन करंती कि देखंतु एबे जो परीक्षाटा बाहरिबो सेटा 2024 में बाहरिबो ठीक अछि तो ता एलिजिबिलिटी 2024 रो रहइबो ठीक अछि माने कोन इथे माने 1 जनवरी नोचन ना तो 1 जनवरी 2024 बुझ पाले तो सेतबल जार एज थिबो नॉर्मल जडा सेथरे किछि चेंज होबन से जेते डेरी हो नेक्स्ट जोटा बाहरिबो सेटा 2024 पे बाहरिबो धरंतु बहुत डेरी गला माने डिसेंबर रे बाहर कले सेमती हबनी मु कहूची डिसेंबर 2025 रे नोटिस बाहरला 2024 रो परीक्षा पई एलिजिबिलिटी कोन हबो कि जनवरी 1 2024 सुधा आपनकर जनरल मेल पई कहूची 35 हेई नथिबा कथा आउ बाकी कैटेगरीज को 40 हेई नथिबा कथा 2024 जनवरी 1 ओके आज रो माने 2025 रो बुझ पाले से दे विल टेक इनटू कंसीडरेशन आउ जदी सेमती एक्सटेंशन दिया हला ताले आपनकर एज आउ ईयर सब रिलैक्सेशन मिलियो सिविल सर्विस रे भी सेमती होउची बट सब दिन जोड़ा सिविल सर्विस रे होउची जुडिशियल सर्विस रे हबो बोली किछि माने नाही एंड आउथरे मु कहूची सब दिन मु आई एम प्रिवी टू लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बट सेटा ओपन ईयर रे मु सेटा कहया पई चाहुनी आपण प्रिपरेशन करंतु ओके सेमिति आपण जो भाबुचंदी डिस्क्रिमिनेशन गोटे हेजिबो कि आपण समय नष्ट हबो सेमिति किछि भी हबार नाही माने कोन हबार नाही आपण समय जोटा एबे दउचंदी प्रिपरेशन करिया पई एते वर्ष प्रिपरेशन करचंदी से सब बेसिकली किछि चेंजेस हबो ओके आरो रीजन भी बहुत अच्छी बट मु सेटा पब्लिक फोरम रे कहया पई चाहुनी केतेबेले विदाउट किंबा क्लास टा परे जेते मु रेकॉर्डिंग बंद करबी सेतेबेले आपण कहबी ओके काहे कि ए डिमांड टा उठुची जदि आपण एमती भाबुचंदी कि कोर्ट ठीक रे सुचारू रूप रे चली पारुनी एमानकर एक्सपीरियंस कम ही जाउची तो बहुत प्रॉब्लम्स होउची सेठी दैट इज ओनली हाफ ट्रूथ तार सबुठु बड़ एस्पेक्ट ता ओके इज समथिंग एल्स दैट वी विल डिस्कस ऑफ कैमरा ठीक अछि एनीवे आसंतु कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सो आउ थरे कहूची कंटिन्यू प्रिपरेशन नले कोन बना से मासे पर कि मासे थाउ 5 दिन भी थाउ ठीक अछि नोटिस तो बाहरिबो प्रिलिम्स आपन को जहां भी हेले क्वालिफाई करियार अछि समस्त से ट्राई करिया कथा जो माने आगु मेंस देचंदी कि यू आर कंफर्टेबल तो ठीक अछि बट डोंट बी ओके ओवर कॉन्फिडेंट केबे भी हेबेनी प्री पाई प्रैक्टिस करिवे एटलीस्ट किछि नले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर देबे जहां भी गोटे आपण प्रैक्टिस बुक गोटे आनंतु सेथरे जते मिनिमम तो 5-6 हजार क्वेश्चंस थिबो ना सेटा ताकू प्रैक्टिस करि देबे सेटा प्रैक्टिस ता बहुत दरकार आपण जते थरा मेंस देथंतु ठीक अछि तापर मेंस में तो जा करे था दैट मोर और लेस वी आर डूइंग ओके सो निजो माइंड को क्लाउड करंतुनी आउ आ पई समय नष्ट करंतुनी ओके हमर भगवान डिपेंडिंग ऑन योर लक एंड लॉट ऑफ अदर सर्कमस्टेंसेस अदर रिसोर्सेस डिफरेंट पिला को डिफरेंट कार बहुत पैसा अछि कार अलगा कोन रिसोर्सेस अछि कार अलगा कोन रिसोर्सेस अछि बट गोटे रिसोर्स जोड़ा भगवान समस्त को इक्वल देचंदी सेटा हला टाइम आ सेही रिसोर्स टा को यूज करिकि अपन फ्यूचर टा कोन हबो सेटा अपन डिटरमाइन करछन अपन जदी एही सब कथरे बसी टाइम नष्ट करिवे ताले लाभ तो हबनी क्षति हबो एते कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे
ओके कहीं आम जानू वैकेंसीज आम सेमती ही बाहर 40 50 60 जाए जाकि 80 उपरू तो केबे बाहर बुझिपारे सो डोंट वेस्ट टाइम दैट इज द बॉटम लाइन कैरेक्टरिस्टिक्स आसतु कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर ओके आ जदि तथा भी आपन को लगुच कि चेंज हम कौन हम जस्ट रीड टे समय ना एक्चुअली कौन कि पिलानकर टोटली बेसिक नॉलेज भी आउपर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रो भी नॉलेज नहीं कि कैन द सुप्रीम कोर्ट मेक द लॉ ऑब्वियसली नो तो से सुप्रीम कोर्ट कौन कहि परिबे से रेकमेंड करि परिबे कि आपण ए जिंसटा करंतु अल्टीमेटली द स्टेट हैज टू डिसाइड आ स्टेट कौन देख के डिसाइड करिवो सी तमिलनाडु रो आंध्र प्रदेश रो कर्नाटक रो मध्य प्रदेश रो अदर स्टेट्स रो अलग जिंस होई पर अवश्य मध्य प्रदेश रे भी ओके साइजेबल आपणकर पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स अच्छा कि आगुरी थिले एबे छत्तीसगढ़ घरिका बाहर गला परे ओके अदर स्टेट्स कार्व आउट हे गला परे तांकर सेटा कमी जाई बट स्टिल सब्सटेंशियल पॉपुलेशन इज देयर ओडिसा रे तो सेटा अछि ना तो सोशल जस्टिस को भी आपन को देखिया पड़ियो आपन कहि दोचन 3 इयर्स एक्सपीरियंस हाउ विल यू मेजर इट खाली यू नो आपनकर बार रे रजिस्ट्रेशन हे गले हबो ओके ना अलग भी कोन जिंस दरकार कि आपण केस रे ना आपनकर आसीबा दरकार कोर्ट से कहबे अच्छा ता दरे आउ हजार प्रकार करप्शन तपर स्टार्ट हो ओके आपण जस्ट एबे लॉ कॉलेज रु पास करिसंती आपणकर नाटा वकालत नाम आसो केमती किए दब आप अनलेस यू हैव योर ओन चैम्बर कि आप पेरेंट्स को चैम्बर अच्छे सेमती केते जण रिसोर्सेस केतेटा पिला पाखे थिबो दे आर प्रिविलेज ता माने स्टेट गोटे पब्लिक पॉलिसी करिवो जोथरे कि प्रिविलेज लोकन को ओके आउरी प्रिविलेज से मान दबो आ जे मेरिटोरियस पिला ओके बट तार अर्थ नहीं बहुत कष्ट से गवर्नमेंट कॉलेज कि कोठी से तार पढ़ी पूरा मेरिट रे अच्छी से ओके जो भी परीक्षा रे बसंतु से क्रैक कर दबो से केवल इथिपे ताको मना कर देबे कि तुम एक्सपीरियंस नहीं राइट सो सेगुड़ा बहुत दिन जदि भी मु कॉन्ट्रेरियन व्यू देखु डेविल एडवोकेट ही कहूची जदि सपोज हेई गला सेटा तापर को सेति कि अटकी जीवो केते पिला संगे संग सुप्रीम कोर्ट रे जाई ओके ता अगेंस्ट रे केस फाइल करिवे आ से केस क्लियर होला पर्यंत ऑब्वियसली तो परीक्षा करै होबनी एमती तो कहि होबन त सेते कोन हबो कोर्ट कहबे स्टेटस को जहा अच्छी सेटा सब जिनस आम एडजुडिकेट कर सारे तार फाइनाली जहाँ हम जो ओरिजिनल केस होता 1991 रे 1990s रे ओके जोटा आपणकर जुडिशियल ऑफिसर्स माने जोटा करथिले तार फाइनल जजमेंट ए पर्यंत आसीनी ओरिजिनल केस रो जहाँ ऊपर सिटी कमिशन हेतिला बुझी पाले सो यू नो दैट इज बेसिकली तने आपण बुझुछन तो केते समय लागिबो लिटिगेशन प्रोसेस ता ता भितरे कोन से माने अलाउ करिवे नुवा जिंसटा को इंप्लीमेंट करिया पे सेटा भी टिके लॉजिकली आपण भाबियार अछि जदि आपण मते गोटे रीजन कहिवे कि सेटा हबा कथा मु आपण को 10टा रीजन कहि परिबी सेटा हबा कथा नुवा ओके सोशल जस्टिस ता हमरो बेसी इंपोर्टेंट इक्वल अपॉर्चुनिटी आपण देबे ओके आउ लॉ रो प्रैक्टिस रो सिस्टम कोन जदि आपण जान नांती तले जानिया पे चेष्टा करंतु सेटा केबे भी लेवल प्लेइंग फील्ड नुवा जी ना से जाय कि लॉ प्रैक्टिस करिवो से जो 3 वर्ष कि जते वर्ष आपण ताको कहिबे व्हाट विल बी हिज फाइनेंशियल कंडीशन ओके स्पेशली इन मेनी इन मोस्ट स्टेट्स ओडिसा को इंक्लूडेड जोठी कि आपण को स्टाइपेंड मिलेनी तो से पिला प्रथमे तो एलएलबी कंप्लीट करी कि आसी छी हैला मु गोटे जनरल पुअर सेक्शन कि गोटे जहार एते अर्थ नाही ता कथा कहूची से पिलार हाईली मेरिटोरियस ओके सब एंट्रेंस से बहुत बढ़िया रैंक रखी कि गवर्नमेंट कॉलेज रे कि जो भी कॉलेज रे से पढ़छन लॉ नॉलेज भलो अछि थ्योरेटिकल नॉलेज भलो अछि ओके बट एबे से जाय कि प्रैक्टिस ताको 3 इयर्स कहउचंती ओके से कोडी प्रैक्टिस करियो तो निजर चैम्बर नाही ओके कस्टमर्स रे से तरह लॉ टा क्लियर कला ए भाबी कि मते गोटे अपॉर्चुनिटी मिलिबो मो फैमिली रो ओके किछि पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आसीबो अगेन 3 इयर्स ताको आपण कहबे तुम लॉ प्रैक्टिस करो ओके सेही टाइम में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तार किए बुझिबो जे प्रैक्टिस करछंती ओके से माने जान परिबे आपण जो कहउचंती लॉयर्स एमती भी होचंती जो माने कि दिन को कोटी टका रोजगार करछंती ओके आउ किंतु सेमती केते जण लॉयर्स कोटी भी छाडंतु 10,000 भी हो दिन को 10,000 हेले मास को 3 लाख केते परसेंट हेबे टोटल एनरोल्ड एडवोकेट्स भितरे जो माने एई टाइप रो अर्निंग करछंती निजे सेटा बाहर कर परिबे बाकी
तांकर कोन होची ओके सो गोटे कंप्लीटली जे इकोसिस्टम रो भितरे नुह ओके जे प्रिविलेज नुह ताकू जेतेबेले आपण से जगह रे पकई देबे ठीक अछि तो हाउ विल ही सर्वाइव फॉर दैट 3 इयर्स स्टेट किछि व्यवस्था करियो जदि स्टेट व्यवस्था कर दबो ताले किछि कहबार नै तो स्टेट या करियो कि भाई जे एनरोल कले से जो 3 वर्ष प्रैक्टिस पीरियड रे स्टेट गोटे स्टाइपेंड गोटे ओके सबसिस्टेंस अमाउंट जहाँ भी से डिसाइड करे 5,000 10,000 सेटा दबो करियो स्टेट सेटा करियो नि ताले आपण सोशल जस्टिस विषय केमती कहउछन ताले ये तो बहुत कष्ट लॉ भी सरी ओके रेजिस्ट्रेशन फी भी बहुत कम नुह आगुर तो माने माने बहुत ही अधिका थिला एबे आफ्टर कोर्ट ताकू ये करचंती बट स्टिल देन सेटा जेतबेले भी बढ़ी पारे तो लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर देयर ठीक अछि अच्छा एटा आउ गोटे रीजन हला ए जो रागर ठीक अछि ये बाबा एलएलबी सारी चंती रैंक पाइले सही वर्ष जॉइन करी गले कि से जेबे भी से जॉइन कले विदाउट एक्सपीरियंस व्हाट इज देयर सैलरी ओके लीगल नॉलेज तो ठीक अछि तांकर सेटा बढ़िबो आपण ट्रेनिंग को आउ बेटर कर परिबे जोटा कि सेटी कमिशन कहितले सेटा ओके आउ से हिसाब रे कर बट सेटा एते मे भी ठीक हे परनी तो जदी ठीक हे परनी सेटा भूल कर पिलार तो भूल न ना सेटा एस्टैब्लिशमेंट रे भूल आपण ट्रेनिंग ता करू न सेमते आपण समय अभाव अछि जा अछि यू कैन प्लान इट आउट ताकू पिनलाइज करिवार सेतरे किछि माने ही नै ओके तेणु गोटे रीजन जदि आपण देबे ओके कि एटा हबा कथा ताले 10टा रीजन बारिबो काहे कि हबा कथा नो तो सुप्रीम कोर्ट को सुनिया पड़ियो एमती तो नो कि आखि बंद कर कह दे नाही आ सुनाबन ओके तो केते दिन से जिंसटा चलिबो सेटा आपण भाबंतु सो से पर्यंत एटा मु वर्स्ट केस सिनेरियो सब कहूची ओके एक्चुअली कोन हबार अछि प्राय मु प्रथमे आपण कहि सारछि सेटा आपण निजे भी जान परिए काहू पचार दरकार नि कोन से यूट्यूब वीडियो कि किए कोन कहउचंती जस्ट रीड 234 कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 234 टा भलरे पढ़ंतु तार एनालिसिस टा देखंतु देन थिंग्स बिकम्स क्लियर को स्टेट गवर्नमेंट कहीं कि एमती चाहिबो कि जोठी मोर पॉपुलेशन ओके बहुत सब्सटेंशियल पॉपुलेशन मोर बैकवर्ड अछि पर्टिकुलर कम्युनिटीज को बिलोंग करछि जो गुडा कि बैकवर्ड अछंती ओके ताहले सेही जगह रे व्हाई शुड आई यू नो मुसे चांस टा काई नेबी ओके जदि गवर्नमेंट सतरे एटा एक्सेप्ट कले व्हाट विल बी द पॉलिटिकल फॉलोआउट कौन सी गवर्नमेंट सेटा रिस्क करिवे कि निजे भाबिया कथा कौन सी गवर्नमेंट सेटा रिस्क करिवे कि जो गवर्नमेंट एटा करि दबो तो तापरे लॉट ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड टू देम बुझले तो तेनु प्लीज डोंट वरी अबाउट दिस थिंग्स से फाइनली जा हबो ओके हबो बट एनीवे आपन पढिबार तो अछि तो पढिबार जेमति कि बहुत पिला कहते मु प्रीलिम्स हेले मेंस में पढी मेंस हेले इंटरव्यू पे पढी ठीक अछि भगवान न करूँ सपोज आपन प्रिलिम्स हेले तापर आपन आ मेंस में पढिबेन आर वर्ष तो पुनी परीक्षा देबे ना बुझी पारे तो ये सही टाइप रो रीजनिंग कि से फाइनलिटी आसु तापर हमें डिसाइड करबा पड़ियो कि नहीं ओके सो एनीवे सेटा ता ऊपर बहुत हमें कथा हे गलुनी सो आई विल नॉट बी डीलिंग विथ दिस टॉपिक एनी मोर एटा अपन निजे भी बुझी परिबे कोन हबो सो अपन यू कैन टेक योर ओन डिसीजन ओके बट बेसिक किछि अपन जदि भाबुछन पूरा गोटे ड्रामेटिक चेंज हे जिवो ओके जदि सेमती हबो तारे बहुत लंबा लिटिगेशन हबो नंबर 1 सेकंड हला एबे जो सब स्टे पे ही जी ओके सेटा बुझुछन तो कोन पई स्टे ही जी से परीक्षा को जो जो यू नो सब पीएससीस माने बाहर करथिले सेटा काई की स्टे ही ओके सेटा एथि पई स्टे ही नी कि यू नो सेटा तार केते रिक्वायरमेंट रहिबो प्रैक्टिस रो सुप्रीम कोर्ट किछटा डायरेक्शन देथिले से डायरेक्शन केतेटा पीएससीस मानले ओके आपण भाबुनती हमर एते डेरी कहीं होची नोटिफिकेशन बाहर करिया पे सो सेटा समस्त से जिंसरा बुझी परलेनी राइट बट एनीवे जा भी हो की इज विथ आर्टिकल 234 ये आर्टिकल 234 पढ़ देला ताको काहू पचारिया भी पड़ियोनी केटा कोन चेंज ही जीवो कि हमको संगे संग कहबे 3 वर्ष एक्सपीरियंस आनो अरे भाई संगे संग 3 वर्ष एक्सपीरियंस की आनियो मु प्रिपेयर करची ओजेएस पई कि जुडिशियल सर्विस पई एई वर्ष मु फ्रेश पास आउट करिची ओके जा जा आपनकर रूल्स एंड रेगुलेशन आपण रखिथिले एते वर्ष पई से हिसाब रे मु पढिची आपण आज आसी की गोल पोस्ट चेंज कर देबे तो सेटा सिंपली अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस जदि भी हम आपण देबे टाइम 5 वर्ष देबे सो दैट से 3 इयर्स रो जिंस रहन आ जो आपण कहउछन जदि 5 वर्ष दिया हला ताले आपनकर यू नो द सेम एज विल
विल बी देयर 5 वर्ष पर से माने ये करिवे अवश्य एज को तांको तापर पुनी ट्विक करिया पड़ियो कारण 3 वर्ष अपन जदी सेठी दउचंदी ओके सो लॉट ऑफ थिंग्स विल बी देयर सो 234 रो कांसेप्ट बुझी जानतु ए क्वेश्चन अपन कहा को पचरिया पे पड़ियो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओके फर्स्ट लिखंतु नंबर 1 प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट रो कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जोडा हमें देखिलु कोन कि नेचुरल सर्कमस्टेंसेस आपण जहा परसीव करूचंती निजो एक्सपीरियंस रे देखुचंती ओके सो इट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस द फर्स्ट पॉइंट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस नंबर 1 बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ओके तापरे नेक्स्ट हला सो लिखि दियंतु गोटे लाइन ता ऊपर derived from common human experience and logical reasoning okay the presumption of fact derived from common human experience and logical reasoning derived from common human experience and logical reasoning second hela ta nature ta kon it is discretionary ठीक अछि so second point लिखंतु discretionary ओके डिस्क्रिशनरी माने कोन ना तांको इच्छा अनुसार ओके इट इज बेसिकली नॉट ऑब्लिगेटरी माने बाध्य है कि आपण करया पड़े जहां भी हेले बट डिस्क्रिशनरी माने इट डिपेंड्स ऑन ओके योर जजमेंट योर डिसीजन दैट इज डिस्क्रिशनरी ओके सो the court has the discretion to accept or reject the presumption the court has the discretion to accept or reject the presumption. Okay. Third है ए presumption को आपण rebut करि परिबे okay counter करि परिबे so number 3 rebuttable. Third तार characteristic देखंतु rebuttable can be countered by presenting credible evidence can be countered by presenting credible evidence to the contrary can be countered by presenting credible evidence to the contrary. Okay. तापरे number 4 non-binding okay it does not compel the trier of fact it does not compel the trier of fact within bracket that is the court trier of fact kiye okay that is the court okay the judge basically amaro iti सबले मन रखंतु amaro iti individual को पॉइंट आउट करिकि केबे आपण आंसर लिखु नांती जेमति कि अमेरिका रे तांकर जदि से माने ट्रायर ऑफ फैक्ट कहिबे ताले आपण से कहिबे जज और ज्यूरी ठीक अछि amaro iti कोर्ट को हबो ओके जज कहले भी हबो बट कोर्ट इज मोर एप्रोप्रिएट सो ट्रायर ऑफ द फैक्ट माने कोर्ट ओके ट्रायर ऑफ फैक्ट to make a specific finding does not compel the trier of fact to make a specific finding compel करूनांती बट कोर्ट को जदि लागिला ताले कोर्ट आउरी प्रूफ पई कहि परिबे ठीक अछि compel okay the presumption of fact does not compel the trier of fact which is that is the court to make a specific finding okay तापरे
नंबर 5 एटा गोटे जनरल कैरेक्टरिस्टिक आपण कहि परिबे इट इज जेतु एटा फैक्ट बेस्ड जेतु एटा सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस ऊपर रहउची तामने एटा केस स्पेसिफिक रहइबो सो दिस इज केस स्पेसिफिक नंबर 5 केस स्पेसिफिक ओके केस स्पेसिफिक देखंतु arises from unique facts and circumstances of each case arises from unique facts and circumstances of each case arises from unique facts and circumstances of each case okay eta hela case specific fifth point arises from unique facts and circumstances of each case तापरे जोड़ा कि आमे तारो डेफिनेशन रे भी देखथिलु कि आरो किछि लीगल बैकग्राउंड नाही it does not have any legal mandate so number 6 which is very important जोड़ा कि आमे डिस्टिंक्शन रे भी आपनकर देखिबा that is no legal mandate no legal mandate okay so तारो गोटे लाइन लिख दियंतु not established by statutory or case laws not established by statutory or case laws एटा देखंतु केते शॉर्ट आउ फ्रेज टाइप रो सेंटेंस लिखा होछ ओके परीक्षा रे डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स जदी बेसी मार्क रो अछि ठीक अछि आउ एक्सप्लेनेशन करि हबो नले एतिक रे हम कंप्लीट करिवार अछि not established by statutory okay or case law right no legal mandate or legal foundation किछि नहीं not established by statutory or case law तापरे number 7 this is also important probative value okay next point लेखन जरा probative value it relies on weight and credibility of evidence presented it relies on weight and credibility weight or credibility dita ko underline karibe of the evidence presented important phrases गुड़ा underline करिबा कि important words keywords गुड़ा underline करिबा सेटा भी जेतोला अपन आंसर लिखुचंती प्रथम रु टिके अभ्यास करिवे ठीक अछि ता माने नु आउ तेटा देयर इज अ 10% रूल मैक्सिमम गोटे पेज रो 10% रु अधिका वर्ड्स अपन अंडरलाइन करनथिबे सपोज अपन ओर पेज रे 150 वर्ड लिखछन 200 वर्ड लिखछन ता माने से टोटल पेज रे मैक्सिमम 20 वर्ड्स हैव टू बी अंडरलाइन एमति नो कि सबु दि लाइन छाडी कि गोटे सेंटेंस अंडरलाइन कर दे ताले अंडरलाइनिंग रो माने कि रहबो इट इज अ वेरी बिग वेपन ओके जोड़ा आपण भी निजे यूज करछन बही की नोट्स जेतले करछन केते पिला हाइलाइट करंती केते पिला डिफरेंट कलर पेन रे लिखंती कोन पई टू ड्रॉ अटेंशन एटा इंपोर्टेंट जिंसटा एटा मु लिखि ओके जे इवैल्यूएट करियो से ताको आपण यू विल ड्रॉ हिज अटेंशन ओके आ तार पुनी भी प्रैक्टिस कोन करिया पड़ियो ना यदि आपण ओपीएससी खाता रे लिखिबे व्हिच इज रूल्ड पेपर तो बेस लाइन रु टिके तळे आपण को अंडरलाइन करिया पे पड़ियो यदि आपण बेस लाइन रे अंडरलाइन करी से केबे केबे देखा जीवन सीट तो कला लाइन पड़थियो ता ऊपर पुनी आपण ब्लू रे अंडरलाइन कले केबे केबे देखा जीवन तो टिके तळे व्हाइट स्पेस रे अंडरलाइन कर ओके तो सेटा सबुठु सहज अदरवाइज यू हैव टू मे बी चेंज द स्टाइल ऑफ राइटिंग कि बेस लाइन रे न लिखि की टिके से जो दीटा लाइन भीतर गार जो स्पेस ता अछि सेठी लिखि की ताको अंडरलाइन करे ताल देखा जीव ओके जोटा आपण भल लागुची सेटा आपण कर परिबे बट ए छोटो छोटो जिंस रे मार्क्स आपणकर ओके अधिक भी आस पारे कम भी आस पारे राइट सो प्रोबेटिव वैल्यू तार एक्सप्लेनेशन रे लिखंतु रिलाइज ऑन वेट एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ एविडेंस प्रेजेंटेड तापरे नेक्स्ट नंबर 8 को आसंतु फ्लेक्सिबल एप्लीकेशन flexible
application. Okay, so just take down. Applied differently based on varying factual scenarios. Applied differently based on varying factual scenarios. Okay, तामाने जोड़ा हमें 5 नंबर पॉइंट रखले ता संगे रिलेटेड एडा कॉम्प्लीमेंटरी पॉइंट टू पॉइंट नंबर 5 दैट इज इट इज केस स्पेसिफिक. ओके, तामाने डिफरेंट केसेस रो फैक्चुअल सिनेरियोज अलगा. ठीक अछि, तो सेही हिसाब रे आरो एप्लीकेशन टा इज केस स्पेसिफिक, केस बेस्ड. तो जदि केस बेस्ड हबो ताले बहुत गुडे सिनेरियोज होई पारे. गोटे केस रो सर्कमस्टेंसेस आ गोटे केस रो सर्कमस्टेंसेस अलगा. तेणु तार एप्लीकेशन टा ताले ब्रॉड और फ्लेक्सिबल. ओके, सेटा से पॉइंट रे कहूछ. नंबर 9 को आसंतु. सपोर्ट्स इन्फरेंसेस. एक्सप्लेनेशन थरे बुझिला पर आपण को निज वर्ड रे देबे, ताकू घोषिया पे चेष्टा करिवेनी, किंतु एई हेडिंग्स रा मन रखियार अछि. supports inferences. Okay, so take down. Assists in drawing logical conclusions. Assists in drawing logical conclusions from established facts. Assists in drawing logical conclusions from established facts. Okay, so suppose ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଆ ହେଇଛି. ଠିକ ଅଛି, ତ ପ୍ରଥମେ ସେଇଟା କୋର୍ଟ ସେଇଟା ବୁଝିବେ କି ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଜାଗାରେ ଥିଲେ କି ନାହିଁ. ତ ୱାନ୍ସ ସେଇଟା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଗଲା ଆପଣ ନିଜ ଜାଗାରେ ଥିଲେ, ଓକେ, ତାହେଲେ କୋର୍ଟ ସେଇଟା ଆପଣ ଯଦି ୱିଟନେସ୍ ଦଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କୋର୍ଟ ପ୍ରିଜ୍ୟୁମ କରୁଛି କି ହଁ ଇଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ଅନଲେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ରିବଟେଡ୍. ଠିକ ଅଛି, ସୋ ଆସିଷ୍ଟ ଇନ୍ ଡ୍ରଇଂ ଲଜିକାଲ କନକ୍ଲୁଜନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ. এই কেসরে এস্টাবলিশ ফ্যাক্ট কোন হলা? উইটনেস যে সেটি থিলা एक्चुअली. উইটনেস তো কହୁଛି ମୁଁ ଥିଲି ନା, ବଟ୍ ସେଟା କୋର୍ଟରେ ପ୍ରୁଭ୍ ହବାର ଅଛି. ମୋବାଇଲ ଲୋକେସନ ଇଏ ସେ ଯାହା ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଗୁଡେ ଲୋକେସନ ବେସ୍ ସର୍ଭିସ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ପଡିଯିବ ଲୋକଟା ସେଠି ଥିଲା କି ନାହିଁ. ଓକେ, once that is established, ତାପରେ ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା court will presume that it is true. Okay, unless that is rebutted. So supports inferences. ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା supplementary. ঠিক আছে, it supplements ओके, जोटा कि किसी टाइप रो आपण कहि परिबे डायरेक्ट एविडेंस अछि. ओके, जदि डायरेक्ट एविडेंस नाही ताले आ ऊपर रिलाय करि हबो. ठीक अछि, डिपेंडिंग ऑन इट्स वेट. ओके, so take down. Acts as an aid. AID माने help. Aid means help. Acts as an aid in the absence of direct evidence. Acts as an aid in the absence of direct evidence. ହେଲା, এটা ହେଲା presumption of fact. ठीक अछि, so please go through what you have written from the beginning till now. कौन लिखिଛନ୍ତି? I'll take a break for 5 minutes. Okay, if any doubts you can ask me after that. Okay, just go through what you have written. So we will resume in 5 minutes.
ओके लेट अस कंटिन्यू किसी डाउट जदि अच्छे या भितर देन लेट मी नो ओके तो এটা आपण देखिले प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट ठीक अछि इफ यू गो टू योर डायग्राम ताले प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट हैला जोटा हमें बीएसए रे किबा आईए रे देखुछु मे प्रिज्यूम ओके जो थ्रू हमें स्टार्ट करिथिलु क्लास टा मे प्रिज्यूम ठीक अछि तापरे जोटा आगु को शैल प्रिज्यूम आउ कंक्लूसिव प्रूफ सेटा आपणकर रहिला प्रिजम्पशन ऑफ लॉ अंडर ओके सो टेक डाउन नेक्स्ट हेडिंग प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एक्चुअली आपण माने प्रिपरेशन रो विभिन्न पिला विभिन्न स्टेज रे अछन बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत जन क्लियर कर सारछन तो एगुडा से माने पूरा कंप्लीटली जानि चंदी भलरे आपण यदि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर ही जाइछि एबे आउ आपण स्पेसिफिकली ओजीएस में पढुचंदी ताहले केवल आपण एबे 2012 रु 2023 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़ा ईयर बाय ईयर खाता करिकी किंबा आपण जेमति भी ताकू प्रैक्टिस करंतु ओके सेति की जदी आपण भलरे कर दोचंदी आउ किछि करिवा दरकार नहीं कोन पय कहले ता हिसाब ता हम आपण कहूच ईच पेपर रे आपण को 12 टा क्वेश्चन से दोच ता भितरु आपण को 6 टा क्वेश्चन करियार अछि हैला 2012 रु 2023 वर्ष ही नटला परीक्षा तो से सब जिंस देखिकी 10 प्लस इयर्स रो क्वेश्चन हम पाखरे अछि हैला मु गोटे पर्टिकुलर सब्जेक्ट नोच लेट्स से प्रोसीजरल रो 10 वर्ष रो माने 10 टा सेट रहिला इनटू 2 कहीं की केना सेठी आपण कोन 50% आंसर करियार अछि ना किंतु क्वेश्चन देइछि 12 टा आपण 6 टा करछन सेटा अलग कथा किंतु प्रैक्टिस पाई मत पूरा सेट टा करिया पड़े ता माने 20 फुल एग्जाम्स पर पेपर आपण दउचंती ओके प्लस इनटू 5 पांचटी पेपर आपण दे 100 टा टेस्ट आपणकर ओके प्रोसीजरल इंग्लिश रो 2.5 आवर्स टेस्ट इंग्लिश रो अवश्य आपणकर ये पड़े तेणु इंग्लिश रो इट इज नॉट यू नो आपको ऑप्शंस केवल मिलिबो कोथरे एसए रे मिलिबो राइट आउ ऑप्शंस आपन कोठी मिलिबो तो मोटा मोटी भाव रे 100 टा आपन पाखरे फुल पेपर्स अछि ओके सेति की जदी आपन गोटे खाता रे लिखियो बसिकी आपन गोटे टाइम बहुत लागिबो प्लस ताठो अधिका प्राय किछि दरकार पड़िबो ओके सेटा ला कथा सेतनै जो माने बेसिक स्टेज पार कर दै जंदी थरे पढ़ी दै जंदी अपन एप्लीकेशन को डायरेक्टली जान आ ताकू ही प्रॉपर्ली आ से जो नोट्स उडा करे ना बहुत जन कोन करंदी जेमति लूज पेपर से लिखि देबे तापर से कोडा हजि जाउथिबो ना एगुडा इंपोर्टेंट जिंस उडा काहे कि ना एथरे आपण कोर्स टा को मल्टीपल टाइम्स कवर कर दैछन तेनु ये पाखरे रहिबा कथा सो दैट परीक्षा जस्ट आगुरु आपण बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन कर दे परिबे ओके सो एनीवे सो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ को असंतु लेट मी जस्ट इरेज दिस सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक तारा लेखंतु प्रिजम्पशन ऑफ लॉ रा so what is presumption of law let us first see that then we will go to the characteristics okay so we have already seen that our legal basis okay it out a legal inference okay it out a legal inference it out a general common sense inference no our basis achi law re okay so take down a presumption of law is a legal inference or assumption presumption of law is a legal inference or assumption
Okay. Explicitly, inference or assumption that the law explicitly, a presumption of law is a legal inference or assumption that the law explicitly directs to be made from particular facts. Directs to be made from particular facts. Law explicitly directs को underline करो. The law explicitly directs to make from particular facts. सेटा underline करो. The law explicitly directs. तो ए प्रिजम्पशन सुडा प्रिजम्पशन ऑफ लॉ तारो बेसिस कोन लीगल बेसिस. ओके तो स्टैट्यूट्स रे थिबो नले कुछ लीगल प्रेसिडेंस रे थिबो. सो कंटिन्यू. These presumptions are established by statutes. These presumptions are established by statutes or legal precedents or legal precedents and often aim to promote policy considerations or judicial efficiency. Okay. Promote policy considerations or judicial efficiency. तारा ए मेन एम टा से आता है. जेमती हमें कहलु प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट टा नेचुरल प्रिजम्पशन. ओके ठीक सेमती प्रिजम्पशन ऑफ लॉ को आउ कोन कोन कोनती. तो टेक डाउन. It is also known as माने presumption of law is also known as intendments of law. INTENDMENTS, intendments of law. Okay. Continue next point रे. तो आरो भी पुनी टाइप्स अछि जोडा हमें डायग्राम रे करथिलु. It is further divided into absolute and absolute माने non rebuttable जोटा. Okay, conclusive proof जोटा मैं कहूँ. Absolute and rebuttable presumption of law. Absolute टा जोड़ा हमें conclusive proof कहूँ. Rebuttable टा okay जोड़ा shall presume हमें कहूँ. Okay, written it. Now characteristics को आसान करो. Okay, characteristics of presumption of law. So first take down जोड़ा की fundamental difference जोड़ा अपना कोई परिये कौन आरो legal background होची. It is mandated legally. So first point will be legally mandated. Okay, legally mandated. So take down established by statutes or judicial precedents. Established by statutes or judicial precedents. Established by statutes. Established by statutes or
judicial precedents. Okay. तापरे next binding. The court is obligated to apply these presumptions. The court is obligated to apply these presumptions. ହେଲା तापरे नंबर 3 अपन देखिले एटा रिबटेबल भी हबो आउ इरिबटेबल भी हबो ठीक अछि सो पॉइंट नंबर 3 रे लिखंतु रिबटेबल और इरिबटेबल okay rebuttable or irrebuttable. Some can be challenged with evidence. Okay, within brackets, lekhantu rebuttable hyphen deki shall presume. Some courts can be challenged with evidence that is rebuttable. Okay, dash shall presume, comma, while others cannot. That is irrebuttable or conclusive proof. Tapare, point number 4, policy driven. एटा हला पॉइंट नंबर 1 रो ओके करस्पोंडिंग पॉइंट आपण कहले सेटा गोटे स्टैट्यूट हिसाब रे हितिबो लॉ बना हितिबो कि लीगल प्रेसिडेंस थिबो ओके ताले सेगुडा कोन से जो लॉ बना होची लॉ टा कोन इट गिव्स इफेक्ट टू पब्लिक पॉलिसी ओके सो इट इज पॉलिसी ड्रिवन so take down often rooted in public policy considerations no like legislation टा काई की होबो statute टा काई करा often rooted in public policy consideration okay often rooted in public policy consideration तापरे सेठी हमें कहलु केस स्पेसिफिक वेरिएबल से सब जिंस कहितलु ओके बट ए जगह रे presumption of law re application is uniform so number 5 uniform application okay uniform application so तार गोटे short sentence लिखंतु applied consistently across similar cases applied consistently across similar cases same type of case re okay it is applied consistently across similar cases but presumption of fact re kon thila na seta case specific thila although similar type ro case thibo but the circumstances of the cases will be different ठीक अछि but ethi kono it is applied consistently across similar cases okay point number 6 very important जोड़ा कि आगु को हमें देखिबा नेक्स्ट क्लास रे द कांसेप्ट ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ and what is the difference between burden of proof and onus of proof okay so number 6 लिखंदु shifts the burden of proof
Okay, it will say BOP is burden of proof, not balance of payment. Okay, shifts the burden of proof. Okay, lekhantu tar explanation ta typically shifts the burden of proof, typically shifts the burden of proof to the opposing party, typically shifts the burden of proof to the opposing party to disprove the presumed fact, to disprove the presumed fact. एटी गोटे साइड रे गोटे क्वेश्चन लिखंतु, एटा अपन निजे रिसर्च करिवे, काली क्लास स्टार्टिंग रे मु पचारिबे एटा. ओके, जस्ट राइट इट डाउन, ताले अपन जान परिबे कोनटा बेसिक आईए रिलेटेड चेंज हिच. ओके, क्वेश्चन इज दिस: differentiate between Indian Evidence Act and Bharatiya Sakshi Adhiniyam on burden of proof, on the concept of burden of proof. এটা তো একটা কনসেপ্টটা সেমই রইবা কথা, বাট সেম আছে কি? ওকে, সেটা আপনার burden of সেম proof আছে টা নাকি? ନାଇଁ sir change ହେଇଛି burden of proof ଟା କେତେବେଳେ shift ହଉନଥିଲା ଏବେ shift ହେଇଯାଇ ପଡିଛି case ଅନୁସାରେ আর তাহলে কোনটা শিফট হଉଥିଲା আগুরু? owners of proof ଟା shift হଉଥିଲା ওকে, ঠিক আছে. অন্য মানে যে মানে মু ডিটেলস রে পড়াইবি, কিছু ব্যস্ত হবার নাই. যে মানে জাননাতি ওনার্স অফ প্রুফ কোন, ওনার্স কোন, ঠিক আছে. জেনারেলি কোন নান্তি কি না প্রথম চারটা ব্যাটসম্যান আউট হয়ে গেলে তো পঞ্চম যে গলা, পঞ্চম ষষ্ঠ যে গলে ওনার্স ইজ অন দেম. ওকে, টু গেট এ রেসপেক্টেবল স্কোর. ঠিক আছে, মানে প্রথমে ওনার্সটা কাউ উপরে ଥିଲା? ওপেনিং ব্যাটসম্যান কো উপরে. সে গলে, সে আউট হয়ে গেলে জলদি, তারপরে ওনার্স খসিলা. ওকে, নম্বর 3. তো তা মানে কোন শিফট হଉଛି না? ओके, से थ्रू या जान परिबे आपण. तो सेटा हमें डिस्कस करिबा. ओके, काली तो आर आउ भी केतेटा अलगा एस्पेक्ट्स अछि. ओके, आउ केतेटा इंपोर्टेंट केस लॉज अछि रिलेटेड टू दिस प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एंड प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट. सेटा मु काली ये करिबी. केस लॉज आर आल्सो इंपोर्टेंट, लैंडमार्क किछिटा, रिसेंट किछिटा. देन वी विल गो टू दिस कांसेप्ट ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ. ओके, तो एटा इंडियन एविडेंस एक्ट आउ भारतीय साक्ष्य अधिनियम रे फंडामेंटल किछिटा डिफरेंस अछि ए कांसेप्ट ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ रे. हमें जेतेले पढी पढी जे एंती मेजर डिफरेंसेस जेतेले आसीबो, ओके, दैट वी विल डिस्कस. तो आपण टिके आरो बैकग्राउंड स्टडी कर देथिबे. ओके, टुमारो 5 मिनिट्स विल हैव अ डिस्कशन इन द बिगिनिंग. सो पॉइंट नंबर 7 को आसंतु. एटा 6 हैला शिफ्ट द बर्डन ऑफ प्रूफ. ओके, जो थरे आपण लिखिले कि typically shifts the burden to the opposing party to disprove the presumed fact. Number 7, predictability. Thank you, predictability, because uniform application. So it is directly related to point number 5. Okay, next है predictability. सेठी कौन थिला? सेठी variability थिला. एठी predictability होची. हमें 10टा पॉइंट लिखुछु. ओके, तो तार एक्सप्लेनेशन सहित जदि गोटे 5 मार्क की 10 मार्क क्वेश्चन पड़ला, 10 मार्क क्वेश्चन पे 10टा पॉइंट लिखा बेन, 6-7टा पॉइंट विथ एक्सप्लेनेशन सफिशिएंट हो सेटा. प्रेडिक्टेबिलिटी रे लिखंतु, provide certainty and predictability in legal proceedings. Provide certainty and predictability in legal proceedings. Number 8, simplifies proceedings. Simplifies proceedings. Simplifies proceedings. Tar explanation ta lekhantu, streamlines the adjudication process. Streamlines, streamlines, streamlines the adjudication process by establishing certain facts upfront. Streamlines the adjudication process by
establishing certain facts upfront. ओके ता माने कोन ना किछिटा फैक्ट्स ओके जोड़ा लीगली मैंडेटेड सेगुड़ा को ओके इट इज थॉट टू बी प्रूव्ड अनलेस इट इज डिस्प्रूव्ड ठीक अछि ताले जल्दी जो आपनकर केसटा जहां हमें देखिथिलु ओके ता ए बेसिकली प्रिजम्पशन रो इन लॉ ओके मींस इन द लीगल डोमेन प्रिजम्पशन इन एनी टाइप ऑफ केस तारो सेटा ही मेन ऑब्जेक्टिव जल्दी केसटा सरीबो समयटा छोट छोट कथा रे बेसी एंती नष्ट होबन सब जिंस प्रूफ करिया पड़िबो ना ओके नंबर 9 प्रोटेक्टिव फंक्शन तो एटा भी आरो गोटे फंक्शन दैट इज व्हाट डज इट प्रोटेक्ट सो टेक डाउन हेडिंग प्रोटेक्टिव फंक्शन safeguards certain legal rights or statutes safeguards certain legal rights or statutes like presumption of innocence etc like presumption of innocence etc और लास्ट पॉइंट लिखंतु कोडिफाइड codified explicitly stated in legal codes or case laws explicitly stated in legal codes or case laws okay now let us come to the difference between presumption of fact and presumption of law amar characteristics देखिलु ठीक अछि this I give you as homework okay एटा एई characteristics रे बाहर जिवो हमर difference ता ठीक अछि तो variability जेमति हला एटी certainty सेटी variability legally mandated okay not legally mandated एई टाइप रो आपण ताको करि परिबे ओके तारो एग्जैक्ट एटा मु काली जतले so you do it and send it to me ठीक अछि एटा एबे कोन करिवे हमें so just जोटा आपण गोटे 5 मिनिट रे लिखि परिबे सेमति जिंस हमें okay that we will you have to write okay so take down discuss presumption of fact किछि देखिबेनी जहा आपण आपण बुद्धि जंदी जति कि सेति कि लिखिबे और 5 मिनिट्स लिखिबे बेसी लंबा भी लिखियार नै आधा पेज होबो कि गोटे पेज होबो मैक्सिमम गोटे पेज भी होबोनी 5 मिनिट रे गोटे पेज जो प्रैक्टिस करछन से माने लिख परिबे से ओके डिस्कस द कांसेप्ट ऑफ presumption of fact and presumption of law with suitable examples एटा कि शॉर्ट नोट लिखिवार अछि हला 5 मार्क 5 मार्क्स त माने 5 मिनिट मिलिबो प्रोसीजरल पेपर एटा तो 150 मिनिट्स 150 मार्क्स 1 मार्क 1 मिनिट प्रोसीजरल लॉ पई ओके तेनु 5 मिनिट रे सारिवार अछि ओके so I will just stop that recording and this thing okay camera 5 minutes में एबे 9टा हला 9टा 5 भीतर ओके ताको दियंतु राइट प्लीज स्टार्ट जेति कि आपण बुझिले चेष्टा करंतु न रेफर करिया पे ताहले तो ही हमें जानिबा ना क्लास रे मु गोटे इंसो लेखिली कि सुनली मु केते ताको एब्जॉर्ब करची जेते बेले ताको न देखि कि कांसेप्ट मु लेखि दे परिबो ओके ये टिके बेटर लिखिबे कि टिके ताको इंप्रूवमेंट दरकार बट लिखिया पे तो पड़िबो ना सो जस्ट राइट भाबंतुनी कि एटा परफेक्ट होबनी कोन होबनी
as such तो आपनको आंसर टा तो यू नो इट विल ओनली बी विथ मी ना किसी असुविधा नहीं सो प्लीज राइट इट डाउन तापर हमें एमसीक्यू 5टा क्वेश्चंस करबा आ ऊपर ओके
लिखिले सो ऑलरेडी टाइम इज अप ओके जो माने लिखि पार नांती लिखिकी पठेबे सेटा नाउ लेट अस गो टू द एमसीक्यूज आज जा पढिलु ता रिलेटेड किछटा एमसीक्यूज हम देखिबा ओके सो एमसीक्यूज जोड़ा क्लास रे जोड़ा करछु जहा पढ़ा होची ता रिलेटेड राइट एंड सो सोडा टिके हमरो फंडामेंटल लेवल रो एमसीक्यूज अछि ओके सो क्वेश्चन 1 टा देखंदु Under the Indian Evidence Act, which of the following best represents the distinction between presumption of fact and presumption of law in a judicial proceeding? Okay, Indian Evidence Act, Bharatiya Sakshi Adhiniyam, same is in a conceptual question, not section related. Presumption of fact is always rebuttable, whereas presumption of law is always irrebuttable. Eta thik hobo ki bhul hobo? Presumption of law is always irrebuttable. Is it true? So diagram ta mane pokan. No, it is not true, right? So shall presume taku rebut kari hobo. Seta rebuttable. Conclusive proof ta joda ki ame kali se details ko jiba. Okay. Answer B kon hobo? one B. Presumption of fact se kochi which of the following best represents ता माने कोन देखंतु ए जो टर्म टा कहिला best represents आ अर्थ टा कोन ठीक अछि सपोज एई टाइप रो क्वेश्चन रे मोर चारटा जाको ठीक अछि ओके एठी तो इजी अछि हां गोटे ठीक ही अछि बाकी उडा बुलवाल अछि ओके सपोज चारटा जाको ठीक अछि और बेस्ट रिप्रेजेंट्स कोछि तो एटा फंडामेंटल जिंसो एमसीक्यू रो कि आपनकर कोन होबो ना ओके यू हैव टू एन्श्योर दैट जोटा सबुठो अधिका ठीक लागुची सेटा आपण आंसर करिए बेस्ट रिप्रेजेंट्स ठीक अछि सो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट is based on logic and human experience whereas presumption of law is derived from statutes and judicial precedents so that is correct okay beta प्रकार correct habo question 1 right let us go to question 2 now Question 2 टा देखंतु which of the following statements regarding irrebuttable presumption of law that is conclusive presumption is incorrect okay conclusive proof जोटा मैं कहूछु सेटा भूल अछि so which of this is incorrect देखंतु conclusive presumption of law are absolute and cannot be disproved by any amount of evidence ठीक ही अछि ओके अवश्य सेटा डिटेल्स में काली पड़िया conclusive presumption of law माने conclusive proof टा ओके बट आमे एति की जानछु सेटा irrebuttable रिबट करी होबनी सेटा ओके सो conclusive presumption of law are absolute and cannot be disproved by any amount of evidence that is correct से पचाची कोन कोटा incorrect D. D is D incorrect. D for bravo D for dog. अच्छा D for dog अच्छा D for Delhi ठीक अछि हम न्यूमोनिक समय को बेसिकली तो सेटा सब नेविगेशन घरिकारे सब यूज हुए ए टा को हमें अल्फा कहूछु बी हला ब्रावो सी चार्ली डी डेल्टा ठीक अछि सो एनीवे तो अच्छा सब गुड़ा देखिए दबा once a conclusive presumption is established the court must accept it as true regardless of contrary evidence obviously can I say any amount of evidences are disprove करी होबनी conclusive एटा ठीक अछि conclusive presumptions of law exist primarily to ensure judicial efficiency and policy considerations correct सेटा हमें देखिथिलु भी तार characteristics that is also correct conclusive presumptions are derived from human reasoning rather than statutory provisions which is wrong okay तो सेगुडा डिराइव हिची कोन आपनकर स्टैट्यूट्स तार लीगल बैकिंग अछि लीगल बैकग्राउंड अछि इट इज मैंडेटेड लीगली ओके तो से पचरती आ भितरु कोटा भूल अछि सो
D is the correct answer. D is incorrect. ठीक है. Now let us come to the next question. A person is found in possession of stolen goods shortly after a theft. The code presumes that person is the thief unless they provide reasonable explanation. This type of presumption is classified as, what will be the answer? Rebuttable. Rebuttable presumption of fact, irrebuttable presumption of law, rebuttable presumption of law. No presumption applies in such a case. What will A, sir. be A? All of you. A will be the answer. Now conquer. Okay. So this is a presumption of fact. Case or circumstance को देखिए कि सेटा ओके कि से जो जिंसटा चोरी हेची सेटा जणक पाखरु मिलिछि. ओके. So unless ये ताको एक्सप्लेन करिवो तो एटा कोन circumstances of the case को नेकी एटा तो किछि लीगल मैंडेट कि सेमति किछि नाही. So it is a rebuttable presumption of fact. Okay. So A would be the correct answer. Next question 4 को आसंतु. Which of the following situation illustrates a presumption of law rather than presumption of fact? को situation रे presumption of law. Okay, रो example आपण पाउचंती. तो देखंतु what will be the answer here? If a letter is posted, it is presumed to have been delivered to the addressee. Okay, कोटा हा presumption of law हबो. ठीक अछि एटा कॉन्ट्रैक्ट रे जेमते आपण देखछथि कि लेटर टा पोस्ट कले, it is presumed to have been delivered to the addressee. B. If a married woman gives birth to a child, it is presumed that her husband is the father. Okay, it is a कहूची presumption of law. एटा एग्जांपल डायरेक्टली हमें लेखिछु हम नोट्स रे. आपण presumption of fact और presumption of law रो एग्जांपल लिखथिले. Presumption of fact रो को दिटा एग्जांपल लिखथिले और presumption of law रो को दिटा एग्जांपल लिखथिले. ओके, गोटे आपणकर जोटा डीएनए रो हम एग्जांपल नोथिलु प्रिजम्पशन ऑफ लॉ रे. ओके, लेक्चर कि नहीं सेटा Yes, sir. पैटर्निटी. Our presumption of death. सो व्हिच विल बी द आंसर? आ भितर देखि दियन. B. B, sir. बी फॉर ब्रावो और B बी for फॉर Bravo. B for Bravo. Bomb. ओके, ऑलरेडी यू हैव रिटन इट इन योर नोट्स. आजि आपण लेखि चंती से जिंसटा. If a married woman gives birth to a child, it is presumed that her husband is the father. Okay. Next, come to the last question. Which of the following best describes how a rebuttable presumption of law differs from a rebuttable presumption of fact? Hela, rebuttable presumption of law kono? Shall presume. Rebuttable presumption of law shall presume differs from rebuttable presumption of fact. Okay, that is kono? May presume. Taro difference se pachau. What will be the answer? Dekhantu.
कौन है आंसर अच्छा गोटे गोटे के देखिदा a rebuttable presumption of law applies only in civil cases whereas a rebuttable presumption of fact applies only in criminal cases এটা ঠিক কি ঠিক আছে কি नहीं सर। wrong okay a rebuttable presumption of law is mandatory and must be applied by the court presumption of law रत प्रथम ही हमें characteristics रे देखिलु कि court is mandated सेटा it is since it is mandated by either statute or judicial precedent तो court बाध्य सेटा को okay presume करिया पे so rebuttable presumption of law is mandatory and must be applied by court this part is correct whereas a rebuttable presumption of fact is discretionary so it is a rebuttable presumption of fact से rebuttable word टा आपण को कंफ्यूज करिया पे से लगै छै presumption of fact as such सेटा ओके आराम रे रिबट करी हबो ओके तो सेटा हैला may presume so it is discretionary for the court से चाहिले सेटा को ओके presume करि परिबे चाहिले प्रूफ मगै परिबे बुझि परले so b is correct c d कहीं करेक्ट नो देखिबा a rebuttable presumption of law c को असंतु is always codified in statutes always codified in statutes अच्छा statutes हो कि legal precedent हो but सेटा codified है whereas a rebuttable presumption of fact जोटा हैला may presume is solely based on judicial interpretation solely based on judicial interpretation in the sense that okay एटा भी confusing अछि बुझिले तो सेति पई b c is not wrong हमें wrong भी कहि परियन त माने आपनकर may presume ता natural presumption लॉजिक कॉमन सेंस रु प्रिज्यूम आपण करूचंती ओके बट सेटा आपनकर डिस्क्रिशनरी इट इज डिस्क्रिशन कहार कोर्ट रो सो इट इज सोली बेस्ड ऑन जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ओके कोर्ट विल इंटरप्रेट दैट इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट तो एटा इट इज नॉट कंप्लीटली रॉन्ग बट जदि बी और सी की मु देखिबी कोटा बेसी ठीक अछि बी टा बेसी ठीक अछि ओके सुनंतु एही टाइप रो क्वेश्चन रे जोटी की मोर देन वन ऑप्शन पाखापाखी रहिबो कि आपण भाबिबे कि हां दीटा ठीक अछि कि तीनटा ठीक अछि सबुठु जोटा स्ट्रांगेस्ट ऑप्शन अछि सेटा को चूज करिवे बहुत जण कोंती क्वेश्चन भूल अछि काइना दीटा तो ठीक हला केमती ना क्वेश्चन भूल न थाए कथाटा हला कोटा बेसी स्ट्रांग दैट इज द बेसिक रूल ऑफ ओके एमसीक्यू क्वेश्चंस दीटा ताले सो सी इज नॉट कंप्लीटली रॉन्ग बट बी इज हेवियर बी रो क्रेडिबिलिटी अधिका अछि ओके डी तपर देखंतो रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ shifts the legal burden of proof, whereas rebuttable presumption of fact merely allows the court to infer a conclusion. Eta mu legal burden of proof, okay, kali padibi, but again, that is not completely correct. Okay, so a bhituru B is most correct answer. C is okay. C ta bhi apna koi paribeni ki eta pura bhul achi, but then B ta base is stronger. Okay. ये जो solely based on judicial interpretation देजी ओके तो सेटा जेतु डिस्क्रिशन कोर्ट रो सो ओके कोर्ट विल डिसाइड दैट इट इज बेस्ड ऑन देयर डिस्क्रिशन ओके बुझी पारले सो बी वुड बी द आंसर एही टाइप रो क्वेश्चन सुडा हमको बेसी बेसी करियर अछि एक्चुअली 100 टा क्वेश्चन भितरु एम्ति क्वेश्चन हार्डली 5टा खंडे पडिबो यू नो द डिफरेंट माने आई नो प्रीलिम्स पे बेसी पिला को असुविधा हुए नी बट जदि के एम्ति अछंती भाउजनी प्रीलिम्स कि केबे आपनकर हे नथला कि कोन यू सी द डिवीजन फॉर एनी टाइप ऑफ एग्जाम ओके एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम इज ऑलवेज 20 60 20 माने 100 टा क्वेश्चन रु 20 टा सहज पड़े बिना प्रिपरेशन रे केही भी ए क्वेश्चन उडा आंसर करि देबे ठीक अछि तो हमको एई 20 टा जहा भी हेले 20 रु 20 करिवार अछि नेक्स्ट 60 आसिला मॉडरेट एटा हला एक्चुअल एग्जाम लेवल क्वेश्चन जे पाठ पढी जंती किछि से माने एटा करि देबे 60 रु 60 न करि परले भी 60 रु 45 तबड़ करि देबे आउ 20 आसिला डिफिकल्ट एटा जे बहुत डीपली पढी जंती कि एगुडा एमिति क्वेश्चन जोडा कि एलिमिनेशन पे रखाबे ठीक अछि तो एई क्वेश्चन छाडी ही दियंतो हमें इंटरेस्टेड नो जदि आसी गला बहुत भलो कथा जदि न आसना गोटे गोटे क्वेश्चन के पढे सेडा कोउटू ता हेड टेल जाना पड़ेनी ठीक अछि तो ये सेही तारी भितरु जाय हमरो मेनली केस लॉ जोड़ा को बहुत के माने प्रॉब्लमेटिक पड़े ओठु कोन केस लॉ
लैंडमार्क केस लो जदी नथिबो ओके जोटा कि गोटे रिसेंट हेची आ एते पब्लिश भी हेनी आपण भी सेटा ताको एनालाइज करनांती ताहले सेटा डिफिकल्ट हेजिवो 80 जो ए 80 रु आपण जदी 60% भी रखी दउचंती 48 ताहले भी आपण आराम रे थ्रू हो जाउचन बुझि पाले तो हमरो टारगेट हला एई 80 टा क्वेश्चन एई 20 टा तो जहा भी हेले हबो एई 60 भितरु आपण 40 टा करिया पे चेष्टा करे 40 टा हेई भी जीवो आपण प्रिपरेशन करे हम 60 मार्क तो मते मिलची तेनु प्री रे 40 रु तळे के रहया कथा नो ओके से पे आपण देखियो बहुत जण कोनती आपण सीधा मेंस में प्रिपेयर करंतु काना मेंस में प्रिपेयर कर देले आपण प्री प्रिपरेशन हे दैट इज ट्रू एथिकली करिवे कि प्री रो 2-3 मास आगुरु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सुडा डी कर देबे कि किछि जो कंपाइल्ड सेट्स अछि आपण टेस्ट सीरीज हो जाबी हो से गुडा कर दे ओके देन यू आर रेडी फॉर कुछ बेले सो जो क्वेश्चन टा जदी आपण कंप्लीट करि नांती एटा देन यू ट्राई टू राइट इट नंबर 1 एटा तो काली हमें देखिबा हम कहली इंडियन एविडेंस एक्ट एंड बीएसए ऑन कांसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट और जो क्वेश्चन टा देइथिले लिखिया पई ताको कंप्लीट करिके सेटा पठे देबे सो टुमारो वी विल स्टार्ट फर्स्ट वी विल डिस्कस दिस काना यूट्यूब हमें बर्डन ऑफ प्रूफ रो कांसेप्ट टा स्टार्ट करियो ओके डिफरेंशिएशन आपन कहि निजे लिखिया पई काना 10 टा पॉइंट्स मिल जाई छी बट स्टिल देन मु डिफरेंशिएशन टा फर्स्ट कले डाकी देबी ओके वी विल देन गो टू कंक्लूसिव प्रूफ some important case laws जो थरे कि हमें देखिबा कि डिफरेंशिएशन किबा जुडिशियल इंटरप्रिटेशन कंक्लूसिव प्रूफ ऊपर कोन कोन अछि ओके सम लैंडमार्क केसेस ऊपर देखिबा और सम रिसेंट केसेस ऊपर देखिबा ओके फाइन सो वी विल स्टॉप हियर देन विल मीट टुमारो सर सर कौन हमर जो लेक्चर्स वीडियो ओडा को जो हमर 13th मार्च रो किछ अपलोड हेनी सर आउ सर जो हमारा लास्ट जो एग्जाम हेतला वीकली टेस्ट तार भी जो लॉन्ग क्वेश्चन जोड़ा को थिला से ओडा को भी अपलोड हेनी मते लॉन्ग क्वेश्चन टा तो मु दे देथिली आपनकर ये रे ग्रुप रे पीडीएफ टा दे देथिली ओके आउ तो आपण सेठू ताकू ये कर दे परिबे ठीक अछि वीकली टेस्ट फोल्डर रे आपनकर येटा अपलोड हे जाइथिबो कोडा जोटा आपनकर प्रीलिम्स रो टेस्ट आथिबो 60 टा क्वेश्चन जो थिला सेटा रैंक आपन को संगे संगे मिली जिवो सेथि पई ओके एटा मु एक्सेसिबल टू ऑल सेथ पई मु दे देछि ग्रुप रे सेटा कालक्रमे ताको अपलोड भी हे जिवो ठीक अछि सेटा एक्सेस करिया पई माने सेटा आपन डाउनलोड कर दे परिबे ग्रुप रो ओके जो मेंस रो क्वेश्चन जोटा रहइबो सेटा आपन को ग्रुप रे गोटे मिली जिवो कॉपी व्हाट्सएप ग्रुप रे तो से थ्रू आपन पाइ जिवे ओके आउ तारो जो मॉडल आंसर्स करिका सेगुडा आई विल अपलोड इट ओके आपण प्राय समस्त लेखा लिखि कर सारला परे ओके सेटा आपण को कंपेयर करिया पे सुविधा हबो आउ तापरे आपनकर जो प्रीलिम्स रो टेस्ट रो जो वीकली टेस्ट होची सेगुडा आपण को ऐप थ्रू दे ही हबो ओके बट मु कहि छेडा जेतु आपण को एग्जाम टा तो किंतु पेपर पेन टेस्ट ना ओएमआर रे ऐप रे दे देले कोन लाभो आपण को रैंक टा मिली गला कि एतिकटा पिला देले मो रैंक टा एतिकी ठीक अछि ताकू पुनी नेले प्रैक्टिस करिवे ओके आउ गोटे जिंस मु देखु छी जनरली कि पिला माने ताको ऑफलाइन दोचन सेटा बहुत भलो बट सेटा आंसर टा ऑनलाइन भी पके देबे ताले आपण को रैंक टा भी आपण जानि परिबे ओके कि केते मार्क्स मोर रहिला तो दीटा काम होई जिवो आपण एपटे एक्चुअल एग्जाम पैटर्न रे प्रिपेयर कले ओएमआर रे मार्किंग करि गयो एपटे आपण कंपैरेटिव आसीबी गला सेतरे केबे भी कंपटीशन टू डरिबेनी ठीक अछि तो कि मु आंसर टा अपलोड कर देले कि मार्क कर देले तो एति जण को इतु मोर रैंक 10 आस जिवो आसले आसीबो कोन हला ताले मु देखि नेक्स्ट टेस्ट रे मोर 7 आसीबो तार नेक्स्ट टेस्ट रे मोर 5 आसीबो तार नेक्स्ट टेस्ट रे मु 1 की 2 भीतर रहिबी ठीक अछि तो काहे कि आपण जो परीक्षा दोचन सेटा एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव मेंस रे जो लेवल ऑफ कंपटीशन इंटरव्यू रे जो लेवल ऑफ कंपटीशन दैट यू नो गोटे दीटा मार्क रे पिला भीतर की बाहर जाउचंती ओके सो कंपटीशन को डरियार किछ नै इट इज अ यू आर इनटू ए वेरी टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब कंप्यूटर ना तो हला कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो ऑब्वियसली इट विल बी टफ इट विल बी कॉम्पिटिटिव ओके टफ न हले भी कॉम्पिटिटिव तो एटलीस्ट हबो आ एठी जोठी हमरो वैकेंसीज कम अछि आ एते एलिजिबल पिला अछंती यू जस्ट इमेजिन एथरा का 600 प्लस पिला देले मेंस ओके इंटरव्यू कॉल असला 50 प्लस को ता माने बाकी जो 550 प्लस पिला रहिले दे आर आल्सो वेल प्रिपेयर्ड एमति नो कि प्रिपेयर करनांती नेक्स्ट जोटा बाहरिबो से माने सब रहिले से ठीक अछि तो त माने कथाडा मोर यू नो डिमोटिवेट मु काहो करिया पे चाहुनी काहे ना आपण जे देखिबे विगत किछि वर्ष हैला बहुत टाइम हैला
ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନେ rank 1 ରଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ବହୁତ ପିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି rank 1, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଲାଷ୍ଟ କିଛିଟା some of the years in last 3-4 years ଆପଣ ଦେଖିବେ rank 1 ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ସେମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି? ଆଉ ଏଇଟା ତ ସର୍ଭିସ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଇଏ ନୁହଁ, ଯେମିତି କି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ରେ ଅଛି, ହଁ ଭଲ rank ରଖିଲେ OS ପାଇବି କି OPS ପାଇବି କି OFS ପାଇବି, ओडिशा फाइनेंस सर्विस ମାନେ ग्रुप ए सर्विस पाइबी। एठी आपण फर्स्ट रैंक पांतु कि लास्ट रैंक पांतु, ओके सर्विस टा आपण गोटे ही मिलियो, तो फाइनल लिस्ट रे रहबाटा बहुत इंपोर्टेंट, ओके? तेनु कॉम्पिटिटिव एते कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपण जेते टाइप रो कॉम्पिटिशंस दे परिबे, जेते टाइप रो टेस्ट दे परिबे, जेते टाइप रो रैंकिंग आपनकर हे परिबो सेते भलो। सो आई वुड ऑलवेज रेकमेंड, आ से रैंकिंग वाला तो पब्लिक होनी कि मु ताको बाहर करी कि ग्रुप रे दे दोची कि टेलीग्राम रे पब्लिश कर दोची, ओके? सेटा आपण ही निजे देखिबे किबा जो माने टेस्ट दोचन हम पिला माने से माने ही देखिबे, तो सेतरे किछि असुविधा नहीं, बिकॉज सम ऑफ यू आपण ओएमआर स्कैन करके मते पठाउछन, ओके? इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर मी टू इवैल्यूएट द ओएमआरस, सेति पे हमें सेटा रखिछु, ओके? कि आपण निजे पाई जिबे आपनकर रैंक केते हला कोन हला, ओके? सो यूज दैट बट ओएमआर रे भी दियंतु काहे ना परीक्षा रे तो ओएमआर बेस्ड आपनको दवा पे पड़े हला। सो एनीवे हां सेटा जो कहउछंती सर कोडा लेक्चर्स वीडियोटा कोडा कहले लेक्चर्स वीडियोटा 13 मार्च पर किछि आपनकर को ग्रुप रे अछि, सेटा एक्चुअली मेन ग्रुप रे फर्स्ट अपडेट हुए, तापर अदर ग्रुप आपण बैच 1 रे अछंती, बैच 2 ना बैच 3 रे सेटा लेखा हितिबो जुडिशियल इंटीग्रेटेड ओजेएस इंटीग्रेटेड बैच 1 बैच 2 बैच 3 आपनकर कोन अछि सेटा 2 रे अछि ओजेएस बैच 2 इंटीग्रेटेड बैच 2 बैच 2 रे ना, बैच 2 और 3 सेटा अपडेटेड हेजियो, बैच 1 टा सबोले जेतु सेटा ओरिजिनल बैच टा थिला, सो बैच 1 टा सबोले फर्स्ट अपडेट हुए, आउ तापर 5-10 मिनिट्स रे एगुला भी अपडेट हे जिवा कथा ऑटोमेटिकली मु देखि देबी कोन पे सेटा हेन, ओके फाइन, वी विल स्टॉप हियर देन। नमस्कार सर, थैंक यू सर। नमस्कार, थैंक यू सर। थैंक यू, नमस्कार।